leader when India's economy. Robotics Manthan 3.0, and as we know that many of us we were there yesterday also, and the deliberations that happened in different technical sessions and also in inaugural session was one of the, I'll say, cornerstones of this drone Manthan, wherein we got to understand many intricacies of the drone ecosystem, whatever sector it can be. Now in day 2, it's more about the scaling, more about the capacity building, it's more about R&D, and it's about industry academia interface. So I have the honor to have our subject matter experts, our domain experts for this very important session. May I request first of all Dr. Ravi Shekhar ji, Director CSIR, Central Road Research Institute, Ministry of Science and Technology, to kindly come on the dais. We have with us Mr. Madhvendra Singh ji, Chief Executive Officer, Electronics Sector Scale Council of India. Sir, if you can join on this dais. Mr. Saurabh Jain, Founder, Uncle Math Lab, EdTech Startup and Advisor, Paytm, ex-Vice President of Paytm. He'll be joining us in a while. We have with us Ms. Nidhi Khurana, AGM, SIDBI, New Delhi Branch Office. Ma'am, can we have you on the dais? I think she is outside. You can call her Bhavna. And we have with us Mr. Nitin Jain, co-founder and Chief Business Officer of Off Business and our former Chair for AI and Startup Committee. Thank you, Mr. Nitin Jain. And Mr. Nitin Jain will be moderating this session. And before we officially start this Day 2 of Drone Manthan, may I request everyone to kindly rise up for the national anthem, please. Mr. Saurabh, welcome. So, yesterday we gained knowledge, and there is a difference between knowledge, which is education, and skill. So, education in motion is skill. And today we have the domain experts who will be telling us how education can be converted to skill and what are the important skill sets that are required in order to become a competent, a capable person for being a part of the drone ecosystem. I have the honor to have Mr. Nitin Jain with us. I'll request Nitin Jain ji, without any further ado, since we are short on time, we can start this session and with your introductory remarks, moderation, and welcome remarks followed by moderation. Just a brief introduction about this session. Okay, should I start? Yeah, you can start from here. Or mics. So hi everyone, really good to see a full house on a Friday morning. So thank you so much for taking out your important time and coming here. I would thank you so much Jatinder ji for your wonderful opening remarks, and thank you so much panelists for coming here, starting with Dr. Chalumuri and Saurabh and Mr. Manvendra Singh, if I'm not wrong, right? Yeah. So thank you so much, and we got very important dignitaries here, where they essentially know about this particular sector like no other. They're seeing things at scale. That's the most important thing. With Dr. Chalumuri looking at the drone ecosystem from the public safety point of view. Sorry, I wouldn't. If we can have a little bit of silence and no crosstalk in the room, please. My request is no crosstalk in the room, please. Thank you so much. So Dr. Chalumuri essentially looking at the entire public ecosystem, infrastructure, and imagine the number of highways that we have. We actually, I think, make close to about 50 to 60 kilometers per day. And the safety of human life, they are monitoring using autonomous systems, drone ecosystems, so that we don't have to employ a lot of humans. And then we got Mr. Manvendra Singh, who's looking at the electronic sectors and trying to make India completely indigenous in terms of production, because so that we don't have to rely on China, Taiwan, Korea, as we've relied on them for far too long. I think we need to start developing our entire ecosystem. I think he's working on that
to make sure that there are enough and more trained people across India who understand electronics, who understand the drone ecosystem entirely. So thank you so much for having us here. For coming here, and Mr. Saurabh Jain, who's essentially looked at the startup ecosystem and understand how scale works. I mean, Paytm with millions and millions of users, right? Probably even touching 1 billion users, not very far, I guess. And he's looked at everything at scale, so he understands the nitty-gritty, how to solve technology at scale as well. Where he started something from scratch, like Paytm started from scratch approximately 12, 13, 14 years back in 2011, 12. And now it's running the UPI infrastructure of India pretty much. So thank you so much. My introduction is that I'm a IIT Delhi computer science engineer, built 2 unicorns in the past in the supply chain space and financing space. Now embracing the AI technology to build my 3rd venture out in the electronic component space. So trying to do that completely agentic. So I understand the importance of agentic. So I want to just, I'll keep this short, but I'll leave it. I'll actually talk about a couple of things that I see happening across India at the moment. The first most important thing happening across India and the world, I believe, is that we are moving away from digital AI space into physical AI space, and that this is extremely important for the drone ecosystem. I think the digital AI space started in 2022-23 when OpenAI came into the foray, and it took the world by surprise. And now it's reached such a level that you got autonomous systems, and if someone is speaking on the other side, you don't know whether it's a human or a bot, and it's so realistic. If you saw Sarvam's demo yesterday, it was brilliant. So we are reaching a stage where I think human actions being mimicked, it's very, very easy, and it's moving towards autonomy. I think physical AI has just begun to take shape in the last year or so, where we had the drone ecosystem, etc., but they were not autonomous as such. But now we are moving into a space where we'll have robotics, drones, we'll have machines becoming fully autonomous, right? And little unfortunate bit is that a lot of data from India is going to the world, where factory workers, etc., wearing these cameras, they're collecting data and sending it across the world. But we can actually see the movement and a lot of money going into physical AI. So physical AI and autonomy is extremely important. And the second thing that I want to talk to you guys about is that it's become a level playing field for any non-technologist out there. Now, it's not very difficult to not be an expert in one area and start building. So, for example, if you do not know anything about technology, you can start building autonomous systems in the digital AI space from today onwards, and you'll be at level playing field with someone who's got years of experience in technology. Now, similarly, I believe in the physical AI space with drones and machines, etc., we're not very far away, where again it's going to be a level playing field that anyone can actually say that, fine, I'm going to build my own drone ecosystem, I'm going to assemble a drone, I'm going to buy parts, and I will know how to do it, because there's enough and more knowledge out there in the ecosystem to start doing this. I think we're about a couple of years away, maybe a year and a half, 2 years away from this happening. We can only see the transition happening in the non-physical world, and in the physical world, this is about to explode. So we are at a cusp of something great, and all of you should be embracing these technologies, whether it's digital AI or physical AI, because if you don't, people will be left far, far behind. And kabhi kabhi main sunta hu ki, we are too old for this, and what do we do? We are not able to learn all these technologies. These are far advanced and all. And the answer is absolutely not. These are not as advanced as you think, because the agents are doing most of the work. It's like speaking to someone in English, right? It's speaking to a developer in English or speaking to a consultant in English. It's as easy as that. So start embracing this particular technology. Don't think it's very difficult, and I leave the stage for the experts to talk about a lot what is happening in the physical AI space. I just don't like to call it a drone ecosystem, because physical AI space can be anything, right? Machines. So a person who is sewing clothes, etc., in 4 years, 5 years time, you'll see machines doing it. Those persons will be elevated to doing more cognitive tasks. So it's not only about drones, it's about machines, it's about robots, it's about autonomy, it's about those robots which are in the warehouse, which have already started lifting things, delivering things. Amazon, Flipkart, Zepto warehouses are all run by robots. So
we are at a very, very interesting space. I think this is the internet moment for us, which happened around the 1990s. And this is, I think, one of the most technological advancements I have seen. Obviously, I don't have that long a life, but I would say industrial revolution was one, internet was one, and this is one. That's where I would place this particular inflection point of technological advancements. So thank you so much, and we would love to hear from others and the experts. So should I invite Dr. Chalumuri? So Dr. Chalumuri, I would love to invite you on the stage for your kind remarks, please. Thank you so much. Can I open my presentation? Can I open my presentation? I have shared the presentation. Bhavana Singh is there. Oh, there. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. Very good morning to all. First of all, I had to say thanks to Jitendra Singh ji, Deputy Secretary General, and also the experts on the panel, Shri Nitin Jain ji, Mr. Saurabh Jain, and Srimati Nidhi Kurana, and Shri Madhavendra Singh, and also the Bhavana Singh. So, myself, Dr. Chalumuri Ravishekar, Director, Central Road Research Institute. I joined as a scientist in 2001 in Central Road Research Institute, and basically I am the civil engineer and did a transportation planning and travel time reliability analysis in a PhD. So, I would like to present on mainly on drones, transportation infrastructure, shaping the future planning and highways, various highways. So, if you see the journey, I started my journey in a diploma civil engineering 1990. So, you see the survey technologies at that time. The survey technologies are started with the simple dumpy level and plane table surveying. Before that, I would like to give brief background about the Central Road Research Institute. We have 7 R&D divisions: traffic engineering and safety, transportation planning, geotechnical engineering, flexible payment division, rigid payment division, bridge infrastructure engineering, and then we have the payment evolution division. So, coming to our digital era. So, if you see the traditional survey instruments, it was started about the plane table and dumpy level, 1990, you see. So, Nitin Jain mentioned about the physical AI and digital AI. The AI is started in 1960 in the world. So, at that time there is only the simple problem of and our problems. The main AI started in civil engineering 1980 and application started in 1990. So, but I started my journey in AI in 1999 when I was in master student. So now you see at that time writing a programming and computational kind of thing, it is very tough at that time. Now you see the data collection, extraction, computational, you have a lot of facilities. There are so much changes, particularly in the last 20 years. So we are very lucky that, so we can have the AI kind of the technologies, particularly the brain functionality, the mimic of the artificial intelligence is just like a brain functionality. आपको जो बच्चे होता है छोटा बच्चे इनको तो बोल देता है जो मदर ने एक्सप्लेन करता है दिस इज ए पेन एंड पेंसिल ट्रेनिंग दैट इज ए ट्रेनिंग सो व्हाट काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स आर built the human brain. So the chemical reaction was happened in the brain that was copied by mathematically. So and we are doing the same application. These algorithms were started in 1970. So now it was full-fledged level, it was going in every applications, not only in one particular engineering. So all medical engineering, everywhere we are started. So coming to transportation related problems, mainly you might have seen the problems in traffic engineering. So you can see most of the roads are congested and also other planning, city level planning, drainage problems. So if you want any kind of this study, so you need a surveying. The survey is a cumbersome exercise. If you want to do surveys, at the time British Survey of India, they started with the traditional way that total station kind of the things are plane table surveying. So now replaced with the drone surveying. You want to survey and enter the city, it will take in a month's time. At that time it is years. So this is the beauty of the advanced techniques. So any kind of the city planning, you need a survey. So AI based drone survey is one of the survey replacement of the traditional one.
So coming to like another approaches are there in a traffic intersection. So like for example, you have any signals are there. So signal optimization, for example, any emergency cases are there, ambulance is going on. So you want to give particular direction the traffic sign, traffic signal to be open, either convert to red to green, automatic signalizer system based on the priority based signalizer system. So then you need a traffic volume counting at the intersection. This can be possible by manual method. It will take like a week time to extract the data and everything. So in a drone you can get the data online, and also you have to classify the vehicle, you have to estimate the volume of the vehicle, you have to do kind of the like remedial measures particular location. So this is the advantage of the drone kind of the things. So and also not only that one, the movement of the vehicle. So the tracking of the vehicle. So movement of the vehicle based on the Bluetooth technology and also AI based technology, it can be done. Already these techniques or applications were already like using in many advanced countries. Even India also started tracking of the vehicle at the intersections and roundabout. Coming to another area is that most of the problems in Delhi is the traffic congestion and also parking problem. In Delhi, aapko any road you have go through that one on-street parking. On-street parking is 20% of roads are occupied by the on-street parking. If you remove the major enforcement on the particular location, so the 20% area will be like cleared, and that will be additional facility that most of the traffic congestion will be reduced if you enforcement parking on most of the corridors. So for this parking also, you can able to identify the vehicle and also number plate mechanism, recovery mechanism, everything can be possible by using the artificial intelligence, by drone and other kind of the techniques. So another area also parking, advanced level parking. You can also see the parking reliability. For example, you want to go any marketplace, you want to see the area of the location. For example, if you visit Lajpat Nagar, any Saturday and Sunday, it is very difficult to get a parking in the particular area. So if you made a programming like that, any parking slots, and also linking with the drone kind of the monitoring and automatic monitoring, centralized monitoring, so you can able to identify the where is the space is available, then only you will plan to go Lajpat Nagar, otherwise you postpone your trip. So this kind of the reliability based parking studies, reliability based studies is very much important for the cities like Delhi. So another area is real time mobility management. Mobility management, these days in Andhra Pradesh state government started survey of all panchayats, all everything by the drone. So they mapped in the road. So 1947, before 1947, Britishers are planned on the like records of the e-Bhumi and every portals, now replaced with the like drone survey. So I visited recently 2 months back my village. So there I was surprised that if you put your staff down, and automatically the coordinates will be known, you can area of the plot and everything can be possible. This is the changes from last 50 years. So this kind of the technology, this technology is most reliable and also accuracy of the thing. For example, the accuracy is the plus or minus 2 cents. So this is the beauty of the advanced technologies. So not only for the like panchayatis, you can be able to do for the landscape planning, like land use planning in most of the urban areas. This can be useful for the study of the master plans and any kind of the comprehensive mobility plans of the any kind of the city. So I did a analysis, alignment design, hill terrain, 17,000 feet again. Height of the like roads are the 17,000 feet in Leh Ladakh area. It is India-China border. We have collected the data by using the drone first time in 2018, and we have analyzed the surface modeling and digital terrain model, and we have designed the alignment in high altitudes. So this is the first case study we have done, and after that various applications and highway infrastructure we have used in the drone, particularly in the case of the highway bridge engineering. Bridge inspection using challenges. Most of the like bridges, CRR has done the health monitoring. Health monitoring of the bridges is very tough by manual approaches. For example, in the middle of the span, in the river and any kind of the big infrastructure facilities, it is very difficult to monitor by humans. So if you have the drone kind of the technology, it was developed by the Dr. Naveed Singh. She is here. She will explain about the drone applications in the like health monitoring of the bridges. So more than 6,000 bridges in India. So CRR done the health monitoring, but recently we have developed this one like drone based health bridge health monitoring systems. So this is mainly so this is a bridge inspection using the drone, and Dr. Navit Kaur, can you explain like your video?
So when we are talking about drone technology for the structural health monitoring or the condition assessment of bridges. So for visual inspection today drones have been very well established. It has conventionally been accepted all over. But when we are talking about the tests, non-destructive tests of the structures, specifically concrete structures, there is nothing available. So we have also started work in that particular direction. We also started with visual inspection, and then we have come up with this device which we have developed on our own from the scratch itself. So that device is built in a way that it can give us the grade of concrete, compressive strength of concrete and the quality of concrete. If there are any distresses in the structure, it is able to tell us, because for steel structures, drones are available for the non-destructive testing of steel structures, but nothing is available for the concrete structures. So we have developed that. So this device also gives us the natural frequency of the structure, the depth, if there are any cracks, the depth of the crack, and the quality of concrete. Like if sometimes you are not able to see the distresses which are inside the concrete. So this device is able to do that as well. So next slide please. These are the progressive, when we put the device, WinSD device, we are calling it as WinSD, Vibro Integrity Sensing Device, when it was installed on the drone. So these are the different versions of the drone which we started working on. We have called it as YU, WinSD Aerial Inspection Unit. And next slide please. So this is finally the version which we have also kept in the exhibition hall. If somebody is interested, we all welcome you all to visit our stall of CRRI. So you can see the device, that WinSD device installed on the drone. It goes and touches the surface of the structure and it creates an impact. It has a small impactor ball. It creates an impact and the sensors capture the data. So that data is then calibrated to give us the compressive strength, quality of concrete, natural frequency, and if you put these sensors across the crack, it will give us the crack depth as well. So these are some of the glimpses of the data. Software has been developed to extract the useful data out of those readings which we are taking. This is showing the repeatability of results for different tests. And then these are some of the tests which we did in the Ghaziabad flyover. In NCR, we did the testing for three structures in NCR and also 5 structures in the standalone condition in Andaman. These are some of the glimpses of those results. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Navid Kaur. And thank you very much, because this technology was transferred already. So anybody interested to join with CRRI, you can join. And also we can, not only this one drone technology application, the bridges, we are doing the alignment design. We are also using the early warning system of the geotechnical engineering, and also would like to apply in future with anybody would like to collaborate any technology jointly for any kind of the civil engineering applications. You are welcome. This is a platform to mutually sharing with the startup companies and research organizations. With this, thank you very much for giving opportunity to the organizers. Thank you all. Thank you, Dr. Saab. Thank you so much for your kind address and showing us what's happening on the ground. So this is great, and would love to welcome you, ma'am. So thank you so much for being here. I think you represent SIDBI, which is essentially financing the startup ecosystem as well as the SME ecosystem. So ma'am has just joined us. So introduction about her is that she's the GM of SIDBI in Delhi. So I'll start with her. So ma'am, I think in the deep tech domain is fairly new for India. So, and all this drone technology and all is fairly new to India. I mean, it did not exist about 3 years back. So your lending policies, how are they adapting to this particular deep tech domain? Because there's a long gestation period, and obviously it's a bit more risky than your usual manufacturing of tables, chairs or something like that. So how do you look at this particular sector, and how is your credit adapting to this? Maybe equity as well, in case you look at equity, if you want to talk about equity investing, because SIDBI does a lot of venture investing as well. So would you want to just talk a little bit about that? When we talk about deep tech, it is always the
patient capital, and patient capital always starts with equity. So the fund which was launched by Prime Minister Narendra Modi ji in 2016, FFS 1.0, 10,000 crore, is being managed by SIDBI, wherein we invest in AIFs, and AIFs in turn invest in startups, where the patient capital is provided in the form of equity. We are also doing debt in the form of venture debt and doing the direct financing as per our mandate. And is it more risky? Have you seen more NPAs, etc. happen over there, or have you had to edit your credit policy? I'm talking about more from a credit point of view, not equity point of view. From credit point of view, we have just started, you know, with the new schemes. There are schemes like DigiCash, wherein working capital up to rupees 5 crores are given on the basis of the strength of the company and other parameters. There is cash defense, wherein, you know, for working on the orders given for, especially for the defense sector, the credit is provided along with other working capital banker. Okay. And the third is GST Sahay, wherein you can opt for purchase-based invoice financing scheme or seller-based invoice financing scheme. So that is pretty much as usual as it would occur. Yes. So I think equity is where the major innovation and patient capital is taking place to fund this particular sector and the growth of India, right? For patient capital, equity is the one source. No, thank you so much, ma'am. Mr. Singh, sorry to keep you waiting. So you've been instrumental in sort of, you know, getting us ready for the next stage of growth, right? So we initially, until now, were just seen as assemblers of equipment, etc. Right? Now we are moving up the value chain, where what is happening is that in electronics we are probably going into a little bit more OSAT, a little bit more in manufacturing, maybe semiconductor space, wafer space, maybe not as much right now, but we'll surely get there. 28 mm and NM, we started manufacturing chips, etc. So how are you seeing the skill part of India develop and adapt to that? Are you facing a lot of challenges producing people at scale, or not really? I mean, would love to hear your thoughts on that. Sure, thank you. First of all, gratitude to PhD Chambers for giving this opportunity, and I'm really happy with the panel which is here. And also congratulations to all of you for spending your valuable time and coming here. That means you really mean it. I'm sure you really want to do something which you're already doing, and you want to do something really big for the country. See, I see that there are a lot of startups here, so I'll make it more relevant to the startups really. See, the ecosystem of the skilling is really transforming pretty fast. So when it comes, in fact, you made a very relevant point of moving up the value chain. See, frankly speaking, that's where the efforts are required. And let's talk about the unemployability first, why the whole, the epicenter of the evolving nature is. Frankly speaking, the unemployment figures for the country is less in a single digit, but you'll be shocked if I tell you that the number of employments in the formal sector is also in single digits. I mean, that's the paradox. And almost 65% plus people are actually in low wage self-employment or micro enterprises. 21% is the regular wages. So this is the kind of an ecosystem that we are working with. It's a huge task to basically transform this, and mostly if you talk about the AI value chain, right, let me break it into 4 parts, starting with the data and the chips, then the frontier models, then comes your deployments or the delivery part of it, and then the applications, right? We've seen a lot of startups and everybody coming into the applications part of it. That's the end use case, that's where the real requirement is. But when it comes to the data and chips or the frontier models or the fundamental models to work on, or what we call them as the LLMs, let me make a little distinction. Please don't waste your time in that. That's more of a sovereign function. And I have been pitching it to the governments that if somebody has to invest money and resources, it has to be the government funded project or the government itself who is getting into the chip manufacturing part of it. With ISM2, the government has done that beautifully. Also coming to the LLMs, I think we really have very matured large language models. We don't need to waste our resources and time into developing LLMs. Let's get into the SLMs, which are also industry specific. If you have to pick a few industries, let's say it's about health sector, it's about infrastructure, manufacturing, or it is agriculture, or it is logistics, or it is education. I think that's where the real requirement of developing this agentic AIs is more important. So if startups have to work in, if the industry has to work in, it should be the
application and the delivery part of it, LLMs and the data and the chips, I think we should leave it as a sovereign function, because I'm sure there's long lead time, there's a lot of resources required, it's a very capital intensive with a high cost barriers to it. Now, frankly talking about, since it's more specific to the drones and the robotics, see, I mean, it really pinches me. I mean, I'll tell you a little story, I mean, to just motivate you. How many of us know about TB2 actually? Anyone has heard of term TB2? You know what happened in the May of 2025? The Op Sindoor happened. Yeah. So what did our all-pervasive adversary threw a swarm of drones at us, right? But we had the anti-drone system Akash Tir, which actually we completely destroyed all the drones successfully. Before that, TB2s were used somewhere else, and that's February of 2022, and that's the largest armored convoy of the world has ever seen in this century. Was moving from Russia to Kyiv to encircle the capital of Ukraine, to bring them on their knees. And that convoy actually spread into 65 kilometers. Hundreds of thousands of impenetrable steel armor moving to Kyiv. You know, the world has never heard of anything like this. But what decimated it, can you imagine? It's TB2s. There's this swarm of drones which really had this high precision munitions, which destroyed their fuel tanks, they destroyed their logistics, which destroyed these convoys. Such precision firing on tanks which nobody would have thought. And TB2s are not some high-speed stealth drones, by the way. They're very sluggish, lethargic, big-looking, propelled, drones which are even low altitude. If you really had a good shot, you can bring them down with a slingshot. But they made all the difference. Now, the story is not about what happened in Kyiv or what happened in India. The story is about the TB2. And the story goes back to 2000, when Turkey was completely going through the economic rupture, and they had a lot of problems with a civil war popping up. They asked for predators from US, the Congress delayed it. They asked for herons from Israel, they got herons. But they didn't get the mechanics to repair it. They did not get the payloads to basically arm them. So that's when this young boy who was studying in MIT, the Turkish young boy, he came back and he said, I will build. And he asked the government to do it, and it's a history. 2015, he developed TB2s, and that's where the history of the complete geography of Turkey changed forever. That's the kind of motivation stories that we are actually looking at. You see the whole, can I continue or probably we can just end it that? So I think that's where I would like to say, but see, we teach, I mean, highly qualified, my peers, I come from IIT Delhi, I've seen in IITs, they go and prosper the Silicon Valleys of the world, but there are a few who go abroad to MITs, they come back and prosper their countries. I think that's the real motivation for us. No, thank you so much, and really appreciate your sharing your thoughts. And I found one thing very interesting. You're saying that concentrate on the application layer, but the government then should concentrate on the chips as well as the frontier LLMs. But follow-up question to that, sir, is, and I would probe you on this a little bit, is that historically majority of the innovation has really come from the private sector, because government, if they invent any technology or it does not release to the public immediately, it's a private sector which actually releases to everyone, right? Now, will that be a constraint, like if the government, let's say, build some LLM technology, it'll reserve it for DRDO or ISRO or the HALs of the world, and won't release to the public for them to use, and how will constant innovation happen? Because if you look at any innovation, it's really come for masses from the public, from the private sector, not from the public sector. So how will that work? Yeah, I mean, globally speaking, that's a trend. But speaking specifically for India as a country, I'm saying, that is where the distinction I'm trying to make, because we already have the developed ecosystem around the world. So for somebody to getting into developing something like an Anthropic, I think, can somebody do it? I think we don't have the money, neither do we have the patient capital to somebody to build perplexity in billions of dollars, and the only unicorn to come out of that is Sarvam, which is now doing decently well. But don't you think that the government needs to encourage more and more money into the private sector for them to start working around this? Yeah, certainly. I mean, there is no prohibiting policy to it. I mean, this is like
I mean, the cost-benefit analysis that I would do. I understand. Why would somebody want it to let somebody? And even I don't think we need an LLM. I don't know. We may have a consensus around it. Somebody is wanting to do it very well. We need a model of our own because ultimately it's the brains that. And let's say the defense sector wants to use LLM model like Plantier is feeding US Army and US Defense and the Pentagon. We cannot afford to use a similar model like Anthropic or OpenAI models for our defense purpose, for sure. That's true. Again, we'll be sending all the data there, left, right, and center, and they will be getting trained on our scale data. So we definitely need an LLM, a sovereign LLM. There is no question about that. But very interesting points you made. Real food for thought. And Saurabh, I'll come to you now. I think from more of a edtech perspective, because you're an edtech guy, I guess, coming out of Paytm, seen scaling up to millions of users. Now, how important do you think has STEM become? Do you think many more people will take up to STEM, that is, science and engineering and maths? I think STEM was always important, and our education system was relatively biased towards STEM. In fact, I can share, I wanted to take commerce with computer science in my 11th, and my school said that there are so many options with science, but you cannot take commerce with science. So new education policy solves that. Right. So STEM is important, but I personally have a very different contrarian point of view in the age of AI. So I think STEM, lot of things in STEM will be done by AI because physics, chemistry generally don't change. So AI is better in it. In fact, some of the so level playing field हो गया है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मतलब for a non-STEM person. For a non-STEM person, so you can be from arts, you can be from commerce, you can be doing now science and technology on your own front, but it will be relatively difficult for science person doing non-tech work. Oh, is it? So that is an interesting thing I can share you. So I was mentoring this girl who was presenting at IIT Kharagpur. So she had created her own microbe. But interestingly, I was telling her, I said, itna profit hona chahiye for valuation and all. And she said, sir, wo revenue और profit के बीच में क्या difference होता है? So I was startled and I thought मैंने कहा तो 11th में पढ़ाते हैं commerce में. And अभी Vijay, Paytm's founder, he went to his alma mater, he went to Delhi College of Engineering, DTU. And he said कि आप engineering कर रहे हो but accounts ज़रूर सीखो. बिकॉज एज अ स्टार्टअप ये मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत बड़ी गड़बड़ है कि आप ड्रोन स्टार्टअप तो खोल रहे हो बट देखनी तो बैलेंस शीट पड़ेगी. ड्रोन ऑटोमेट हो सकता है, बैलेंस शीट तो आपको ही देखनी पड़ेगी बिकॉज वैल्यूएशन. दैट्स वेरी वेरी ट्रू. सो आई थिंक इन द फ्यूचर आर्ट साइंस कॉमर्स वैसे भी मैंने मतलब बिकॉज आई हैव बीन इन एडटेक, आई थिंक आर्ट साइंस कॉमर्स ब्रॉडली ना कॉलेज के लॉजिस्टिक्स हैं कि आप आर्ट साइंस कॉमर्स कर रहे हो. जब आप प्रैक्टिकली कर रहे हो तो आर्ट साइंस कॉमर्स एक साथ होता है. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आई टेक अ स्टार्टअप मास्टर क्लास फॉर स्टार्टअप इंडिया, तो उसमें मैं एक स्लाइड देता हूँ. सो टेस्ला इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट डिज़ायरेबल कार. आर्ट है उसमें, डिज़ाइन है. टेस्ला साइंटिफिकली ऑब्वियसली इज़ अ गुड इनोवेशन एंड टेस्ला इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट कार्स. मतलब आपको इंडिया के अंदर चीपेस्ट मर्सिडीज इज़ 50 lakhs. टेस्ला इज़ ऑल्सो 50 lakhs नाउ. एंड टेस्ला इंपोर्ट हो रही है, मर्सिडीज हाफ इंडिया में बन रही है, तो मर्सिडीज पे कम लगती है ड्यूटी. तो टेस्ला इज चीपर देन मर्सिडीज, टेस्ला इज हैविंग बेटर टेक्नोलॉजी देन मर्सिडीज एंड टेस्ला इज एज गुड एज मर्सिडीज इन डिज़ाइन. तो यू हैव टू हैव ऑल थ्री. अगर आप एक कार, हमारे यहाँ तो देश में एक और प्रॉब्लम व्हाट यू आई हैव सीन एंड सर एक्सक्यूज मी बट गवर्नमेंट में मैंने एक चीज़ देखी, आप गवर्नमेंट की कोई भी वेबसाइट देखो तो उसमें क्या होता है, इंजीनियरिंग तो पूरी है, साइट तो चलती है, बट डिज़ाइन की गड़बड़ है. यूज़र एक्सपीरियंस इज़ वेरी लो. आई थिंक वेयर स्टार्टअप्स कैन हेल्प. इन फैक्ट इन पेटीएम वी आर ट्राइंग टू डू दिस. सो आई थिंक एक जो यूज़र एक्सपीरियंस है ना, वो डिजिटल इंडिया में समाउ मिसिंग है. एंड यूज़र आप साइट बना देते हो, ऐप बना देते हो, पर वो यूज़र एक्सपीरियंस जोमेटो पेटीएम वाला नहीं आता है with more. The research says the top 10 qualifications required for the next gen is one of this user experience. एक चीज़ also I want to add at this point of time, I had that in mind. तो we all know drones will change the world, but interestingly world same ही रहता है. Just to give you an example, so Jeff Bezos was asked कि things are changing so fast, how do you keep track? So he said कि
दुनिया में वही चीज़ चलती आई है, वही रहेगी. ही फोकसेस ऑन दोज थिंग्स विच रिमेन सेम. तो ही सेज पीपल वांट फॉर अमेजन चीपर गुड्स, faster delivery and more SKUs, more options on the site. और वही आप Is that why Jeff Bezos and Elon Musk don't go along well? शायद बट बड़ा मैच्योर बात लगी मुझे, बिकॉज चाणक्य के ज़माने में भी आप यही करते ना कि फास्टर डिलीवरी चाहिए, चीपर प्राइस चाहिए, मोर गुड्स चाहिए. और आप 1000 ईयर्स एगो बाद आप भी जाओगे ईयर 3000 में, तो वहाँ भी वही चाहिए. तो व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर, ये मैंने एक कॉन्ट्रेरियन पॉइंट ऑफ व्यू में इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं ना, तो आई हैव सीन विजय वेरी क्लोजली, आई नो अबाउट भावेश एंड दीपेंद्र वगैरह, बिकॉज वी आर फ्रॉम ऑल स्टार्टअप्स वगैरह में रहे हैं. एंड आई हैव सीन द इंडियन IT कंपनीज. आई वॉज इन नेस्कॉम प्रोडक्ट काउंसिल ऑल्सो. तो जनरली IT कंपनीज कैसे स्टार्ट करती हैं, वी हैव टू डू समथिंग इन AI एंड देखो उसको कैसे यूज़ करना है. एंड विजय कैसे स्टार्ट करते हैं, ही सीज अ प्रॉब्लम and then he sees ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी, एंड टेक्नोलॉजी बिकम्स अ टूल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. तो आप, और ऐसे ही जेफ बेजोस वाली चीज़ वो देख रहे हैं. और इनफैक्ट मैं एलॉन मस्क का भी ऐड करना चाहूँगा कि वट एवर एलॉन मस्क इज डूइंग टेक्निकली इज गुड, बट US पीपल आर क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स दैन सोल्यूशंस. प्लास्टिक इज़ वन एग्जाम्पल. अभी हमने देखा कि AI में बहुत कुछ हो रहा है, ड्रोन्स वगैरह में हो रहा है. तो यूक्रेन रशिया वॉर एंड ऑल दोज वॉर्स, अभी दुबई में क्या हुआ. So newer technologies are creating newer problems also. So as a entrepreneur आपको ये देखना है कि where are the problems. Don't focus on technology, focus on problems. I'm not saying don't focus on technology का मतलब ये नहीं है कि आप वो पुराने ज़माने के घोड़ा गाड़ी चलाना शुरू कर दो. What I'm trying to say is see problem. मुझे तो ये लगने लगा है कि every person will have to get some drone gun or some drones for saving the house. तो मेरे घर पे अगर ड्रोन उड़ के आ जाए तो मैं क्या करूँगा. So there are a lot of opportunities on retail level, or DLF would ideally need some drones for saving cyber city from some attacks. तो I think those kind of that is the future. सोचा ही नहीं था I think 2 साल पहले तक. हाँ, मतलब मुझे तो क्लियर लगता है. अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मेरे घर के सामने एक ड्रोन उड़ रहा था, किसी ने वो वीडियो वाला उड़ा रहा था अपने घर के ऊपर. एंड आई थॉट, मैंने कहा अगर ये मेरे घर की शीशे पे आके लग जाए या कुछ गोली मारे तो मैं क्या कर लूँगा. आई डोंट हैव एनी डिफेंस. बट द वे थिंग्स आर गोइंग इन ईरान एंड यूक्रेन, आई थिंक 5 साल के बाद ये होगा, साइबर सिटी पे आतंकवादी आएगा और वो ड्रोन से गोली मार देगा. एंड एट दैट टाइम यू नीड अ स्टार्टअप टू सेव साइबर सिटी. सो दोज आर द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो आप देख नहीं पाते. आप सिर्फ LLM बनाने में, ही वॉज सेइंग, आप LLM बनाने में लगे रहते हो, विच इज़ अ लूजिंग गेम. इनफैक्ट विजय हैड ट्वीटेड अभी रिसेंटली कि he was exploring and 5 billion was the cost. तो मासा told him कि 5 billion से कम में नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है बना के. तो what I'm trying to say is कि don't try to copy Americans. There are n number of opportunities जहाँ पर आप जाओगे और मिलेगा आपको options, and try to create startups there. Yeah, that's a very fair point. And आपने एक चीज़ बोली कि टेक्नोलॉजी पे फोकस मत करो, एक्चुअली प्रॉब्लम्स पे फोकस करो, विच आई ऑल्सो बिलीव इन. क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड बन गई है कि वो बन जाएगी, वो पता है कि कोई ना कोई बना देगा, बट फोकस ऑन द प्रॉब्लम एंड स्केलेबल प्रॉब्लम. इस पे मैं एक लाइन कहता हूँ, मैं जनरली अपनी स्पीच में कहता हूँ, तो टेक्नोलॉजी इज़ लाइक अ गर्लफ्रेंड, चेंज होती रहती है. प्रॉब्लम 7 जन्मों की साथी हैं. तो आप 1000 साल पहले जाओ, लोगों की जो प्रॉब्लम थी 90% प्रॉब्लम्स आज भी वही हैं. बट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो चेंज हो गई हैं बहुत ज़्यादा. तो डोंट फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन प्रॉब्लम्स. टेक्नोलॉजी इज़ अ टूल फॉर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम. So thank you so much. And Dr. Chalumuri, I would come to you. So you showed a lot of technologies, etc. But how do we get lab R&D out there in the open for masses to use and not only government for use? जैसे आप बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हो. Why can't the private sector embrace the technology? And why can't you sort of open source it in somehow, some way or form कि भाई हीरो होंडा को अपनी फैक्ट्री मैनेज करनी है या फिर आसपास के एरियाज मैनेज करने हैं, वो भी आपकी टेक यूज़ करें. तो वो कैसे करें और स्पिन ऑफ स्टार्टअप्स कैसे करें, एंड हाउ डू यू इनेबल दैट इकोसिस्टम? Because we are not only focusing government related problem, as you earlier presenters told about the problems identify करने. Problems हमको problems आता है solve करने के लिए. For example, like any state government having the problem, like canal road irrigation problem, canal road solutions, or maybe road deterioration problems. This problem will come to CRRI. So CRRI team will start the solutions using the adaptability of the new technologies.
That is the starting one. That's why we have started like that. Even drone initiated like that. So bridge health monitoring, we have started like 40 years back. So 6,000 bridges we have done in entire India. So we have identified the problem there, because in a river bridges, it is very difficult to monitor under the deck bridges and everything. It is incomplete kind of thing. So then we started the using of the drones. Similarly, like we have seen that topographical survey, we have used the high altitude road design, element design in India-China border. Then we have adapted the drone unmanned aerial survey vehicle data, and we have designed. So we always work with the industries, not alone with the government alone, because a lot of technology transfer recently we did with the industries. So spin-off companies also can be possible, because once we develop the technology inside, but technology also we will not come with any alone problem. So the problem will be generated by the user, the public domain. The public domain, any kind of the state government or maybe central government. So that problem will be, solution will be developed inside. Then we will have a mass level lab to land. Lab to land can be done without industry partnership. This cannot be possible to change into the lab to land. So that's why we have recently, we have developed biobitumen agricultural waste technologies, and we have already technology transferred to the 26 companies or startup companies in India. So this is always we are ready. Like Central Road Research Institute is a separate one of the institute from CSIR. So we have working on the road related, highway infrastructure related problems. So definitely any spin-off companies or any kind of startup companies can also be possible to start with in CRRI. Yeah, no, excellent. So if there are representatives of PhD CCI, how much time do we have? Accordingly, I will then... We have till 12 o'clock. So I think we have got 25 minutes. What I'll do is that I have a lot of follow-up questions, but better if we just ask, people on the ground here, if you have certain specific questions, around drones, AI, and so on and so forth, and which panelists you want to ask, would love to get some questions on from the audience here. Sir, on the blue jacket, please. Sir, sorry, I'll come to you next. Can we have the mic onto them, please, sir? If you can use the mic, and please also direct the question to a specific panel member if you can. Yeah, Dr. Chalupuri Ravishekhar, sir. Sir, how frequent and how quickly can you do a complete scan of a building or I would say, or a bridge, something like that? And how quickly you can produce the results in one sweep of the drone flight? Okay, very good question, because the type of survey is very important. For example, if you want to do feasibility and detail and any kind of remedial measures. So in a feasibility, in a half an hour go, we can scan the entire the bridges, and you can collect the data and preliminary data. We want to examine it in detail investigation, failure investigation, need much more time. Probably in a one day, we can do internally, and all kind of the tools and data extracted and downloaded, and do some kind of the traditional or conventional planning. So have you done a complete day deep dive sort of analysis? Yes, we have done one complete bridge by using the drone survey, and we have tested our approaches in lab, and the technology was transferred recently. So I wanted to understand, so let's say if I take an image, I see some cracks, and then I take the drone and that points the hammer or the impact, and then it takes the data. Yeah. So in a complete day, you're saying you have that's the actual frequency of having a bridge scanned. Yeah, exactly. If you the site itself, you have seen the failure, the issues. There itself in half an hour you can able to see the data. And if you want to remedial measures, definitely need some kind of the methods. Those methods to be studied in detail. Then you come with the remedial measures. Okay. Yeah. So my other question would be to Nidhi Khurana. So that would be that this is something that I asked yesterday also, but I didn't get a quick answer. So this was basically, so what is the frequency of the page updation of funds page? And can it also display how much fund is actually transferred or delivered versus sanctioned? Do you need exact data? So out of the 10,000, we have almost committed 13,000.
and disbursement. Out of 10,000 you committed 13,000. 13,000. 10,000 crores we got, and 13,000 has already been committed. Almost. I can. So that's a sanction amount. How much has been delivered amongst the years, and what would have been the frequency of delivery of those funds? The frequency, see, the AIFs invest in startups, and the AIFs invest in startups, and they come to us, for doing the investments. And as soon as, we receive the request, we process the request within 2 weeks. So the way I see as a startup, I see most of the AIFs are either Bangalore based or Mumbai based. We don't find many of them in Delhi. So you There go are and many in Delhi. There is one page called, you can see at, SIDBI so they have a FFS. different case also. There is a page SIDBI FFS. When you click upon that, you will get all the details of the AIFs, and the AIFs as well as those who are based in Delhi also. You will have the details, their contact details also. So just a suggestion that if there can be any mandates with a number of AIFs in every city, mega city, that would be very much helpful for us startups, because most of the time we go on online meetings that doesn't give fruitful results. So it will be very much beneficial if you could go and ask for these AIFs to be in cities, some sort of mandate that if you're saying that you'll invest in one city, you be there with an office. So that's not too much chargeable, I mean, for them. So in that way, we can connect them, they can come to our office and see what we are delivering. So I think that funding gap would at least be catered to. We can share it as a suggestion, for sure. Sure, thank you. Good suggestion. So a little bit, I can add specifically. So see, there are a lot of funds in Delhi. Somehow I think you are not knowing about a lot of funds. Name them, sir. I'll try. So one of the funds is Indian Angel Network is now having an AIF. We know about that. We know about that. So and there are a lot of Ruparel madam. So a lot of funds are there. So best I think source will be Tycon mein jao, so you will get to know about a lot of That's funds. one of the things I'm asking about. There are नहीं, not many. obviously Bangalore में ज़्यादा हैं, but मतलब I think दिल्ली में उतना बुरा हाल नहीं है कि हमें 90% बैंगलोर में ही जाना है. In fact बॉम्बे से better है दिल्ली में हाल. बॉम्बे particular से ज़्यादा better है हाल. But ठीक है, I understand. Then there are three categories again of the SEBI registrations. That 1, 2, 3 category. If we are talking about 0 to 3 TRL or 4 TRL, I'm looking at those fundings as well. So early stage basically. Early stage fundings. Right? So just to give you, I would be starting a incubation program with some fund very soon. So in fact, अगर कुछ होता है तो you can get in touch with me. I can connect with you. Thank you so much, sir. You had a question? Then I'll continue the moderation. I'm Rajiv Bhatia. I'm associated with manufacturing training activities, and we find that we are trying to introduce AI and smart manufacturing in various factories. Now the question is that we talked about STEM, and what we find is that Dr. Ravi Shekhar also said that earlier, the brain changes chemically and now we solve mathematically. But I find that even today, both engineering and non-engineering graduates are still very weak in maths in India, especially when it comes to AI level. So don't you think that STEM needs to be strengthened? See, I feel unfortunately we have gone to AI before going to HI. तो ह्यूमन इंटेलिजेंस में बहुत कुछ इम्प्रूव हो सकता है. एज एन एडटेक पर्सन आई कैन टेल. अनफॉर्चुनेटली मैंने आई स्टार्टेड अ कंपनी कॉल अंकल मैथ लैब. हम कर भी रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब आप नॉन टेक सोल्यूशन लेके जाते हो किसी के सामने, तो वो उसको लगता है तो बड़ा नॉन टेक है, आजकल तो AI लाओ, ये लाओ, वो लाओ. आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन बताता हूँ. मेरी डॉटर एक दिन रोने लग गई अभी पीछे कि मैथ बहुत डिफिकल्ट है. तो वी हैड क्रिएटेड मैथ कॉमिक्स. तो वो मैथ कॉमिक्स से पढ़ाया, उसके नंबर 90% आ गए मैथ के एग्ज़ाम में. तो शी वॉज वेरी हैप्पी. तो मैं IIT कानपुर में मैंने स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा व्हाट इज़ पाई. नोबडी कुड टेल द मीनिंग ऑफ पाई. सबको वो 3.14 पता है, 22/7 पता है. ऐसे ही ई, अभी मैं किसी इंजीनियर से पूछ रहा था, मैंने कहा ई क्या होता है. तो आपको ई पता है, बट आपको वो ई का कंसेप्ट नहीं पता क्या होता है. तो अनफॉर्चुनेटली मैथ, स्पेशली 9th से जो मैथ आती है, बहुत ही घटिया तरीके से पढ़ाई जाती है. एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट टू सॉल्व इन माय ओन स्टार्टअप. एंड दैट शोज, जब आप प्रॉब्लम आती है, जब आप इंजीनियर्स देखते हो, तो बहुत सारे इंजीनियर, एक एग्जांपल देता हूँ.
So I was one of the first people who started mobile app company in India. तो मैंने 2005 में I recruited an engineer and I wrote India's first book of mobile app development, Java पे जो mobile apps बनती थी. I gave him my book and I am not an engineer, मैं chartered accountant हूँ by degree, but I wrote India's first book as well as I've trained more than 1,000 engineers in Bangalore, Hyderabad, etc. on Java and mobile technologies. तो मैंने उसको बुक दी, मैंने कहा स्टार्ट रीडिंग इट एंड प्रोग्रामिंग कर. अभी जट सर ज़िंदगी भर तो मैंने कोचिंग ली है, इंजीनियरिंग कॉलेज में कोचिंग से पहुंचा, और आज आप कह रहे हो सेल्फ स्टडी करके शुरू कर दूं, तो वो तो हो नहीं सकता. अब देन आई केम टू रियलाइज, मैंने कहा इंडिया में तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि आप तो एज्यूम करते थे ना कि वही इंजीनियर है, आपने इसको रखा और हो जाएगा. तो दैट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा सिल्वर प्लेटर पे देना पड़ता है, खुद नहीं सीखते हैं. दैट्स व्हाट यू. हाँ, वही बेसिकली क्या, मतलब सेल्फ स्टडी 80% पीपल इन इंडिया कैन नॉट डू सेल्फ स्टडी. स्टेम में ये और प्रॉब्लम है, बिकॉज आकाश इंस्टीट्यूट्स ऑफ द वर्ल्ड वहाँ ज़्यादा है. कॉमर्स वाले फिर भी थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी इसलिए कर लेते हैं, वहाँ कोचिंग का फैशन कम है. So we'll move on. So Dr. मनवेंद्र, आपसे एक सवाल है बेसिकली कि अभी हमारे पास करीबन ड्रोन में जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है सब कुछ, करीबन 1 लाख ट्रेन पायलट्स की ज़रूरत होगी या होनी चाहिए, राइट? एंड मे बी मोर देन दैट, एंड टेक्नीशियंस एंड ऑल दैट. सो हाउ आर वी सॉर्ट ऑफ ब्रिजिंग द गैप? बिकॉज अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो थाउजेंड्स में भी नहीं होंगे हमारे पास जो. So are we, what are we doing to actually bridge the gap, and what are we doing to generate that kind of employment and skillability of people? That's true. So see, there are a lot of programs that have been rolled out by the central government also. A lot of states also promoting manufacturing and application-based programs for the drone development. But when it comes to skilling, see, I mean, don't take me otherwise, but of course I agree with what you're saying. Our colleges of today have actually become the graveyards of employment. See, unfortunately, people who are coming out of colleges do not really, this is a scam, I call it, SCAM, that is suitably certified, but absolutely mediocre. So, I mean, we should not quote that. So, that is why, see, we working, see, I am the kind of a person who will certainly come to you with problem statements, but I also tell you what to do about it. The solutions, as a Skill India, part of Skill India program, and Skilling India in electronics, including the semiconductors, we have a 5-star solution to these things. That first is the centers of excellence. In fact, you made a very valid point when you were talking to Dr. Shekhar, that how do the private sector utilize the resources of the government to not only basically do the testing or do simulations, but also do, kind of use those facilities for fab and otherwise. So in fact, one of the programs, even the Ministry of Skill Development and Employment has now, entrepreneurship has now come for, is the centers of excellence. So we have almost like 10,000 training centers in pan-India. And this is, we work in partnership with the industrial training partners, we call them. So these are the people from the industry, the companies who basically give us their premises, the resources, where we mobilize the people. Especially our focus is mainly tier 2, tier 3 cities, because I personally believe that talent does not really confine to tier 1 cities. Everybody who wants to join a good college, good coaching, good employment, everybody is running to tier 1 cities, the metros. Everything is confined to the tier 1 cities, but our focus is to bring the resources back to tier 2, tier 3, where talent also resides there. Now, with these centers of excellence is one of the greatest models, but unfortunately there was no standardization to that. So the government has now mandated that every center of excellence should be registered, recognized, verified, and then the government projects can be given to those centers in perpetuity. I mean, they're not fly-by-the-night operators. They are people, and they are the resources which will continue to remain. The second good model that has come about is the PM Setu project. The ITIs were created to cater for the 80% dropouts who don't go to colleges. I mean, if we talk about statistics, you'll know the real India, I mean, we talk so much about college graduates and all. 80%, more than 80% people don't go to colleges. More than 70% people don't do their 11th and 12th in India. So that's what do we do with these people? I mean, our demography must not become a challenge for our country. And there is something called as NEET. अभी NEET का इतना बड़ा वो चल रहा था, but not that NEET. NEET is neither in education, employment or training. And ये लोग कहाँ हैं जो NEET में नहीं है, वो जंतर मंतर पे हैं. So,
So this is what is the ecosystem that we are actually looking at. So PM Setu, we are trying to identify the ITIs and bring the clusters around with the industry's participation. See, the whole focus of Skill India is, I call it, do you find people who are day one job ready? 100% no. Industry is 100% no. I mean 0.01% to hona chahiye tha ki haan theek hai, at least I recruited one guy and he was job ready on day one. It never happens. There is what we are facing is a freshers apocalypse. I will never get a fresher who is day one job ready for me. I have to invest resources and time either to my companies abroad to get them trained and put them here, and then they'll think I'm too good for you, now I'm going somewhere else. So that's the paradox the companies are facing. But now for the colleges, we really have a very beautiful program that's called the AEDP, that is Apprenticeship Embedded Degree Programs. And now that is being deployed and colleges are finding it amazingly good. Because what's happening is that while they're doing their degree programs, 3 years or 4 years, there is a 1 year of apprenticeship hands-on. The companies provide them the training where they're not going to the college, they're going to the companies as real employees, and they work there for a year. They get their the companies also get paid under the NAP scheme. And when they come back and they graduate from the colleges, they not only have the college degrees, but they also have a certification of having done that particular hands-on training with the company. Yeah. So company can also basically employ them, or anybody else can employ them. The best part is that these are all standardized. Somebody who is doing with an industry in Bihar can go and join in Bangalore at the same time. Yeah. No, great, excellent. So we'll continue with the questions. We probably take 3 or 4 questions before we wrap up. So any other questions from the audience? Yes, sir. On hai. Hello. You know, our country is facing a lot of problem with semiconductor chips, and drone technology requires a semiconductor chips and high quality cameras. So these are the main issue, and the supply from the China is banned. So it gives some sort of the speculation that these instrument might be procuring from gray area market. And second issue is that drone battery life is very slow. Hardly a drone can work more than 30 minutes, sorry. So how to cope up with these two things? So any specific panelist you want to direct? Anyone can is expert on this. Yeah, go for it. So, see, semiconductor mein things are improving. I can share, I would not name the group. नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ. So, अभी recently I was in touch with the top management of a old business group मैं कह सकता हूँ. So, they are exploring semiconductors. There are a lot of big corporates who are exploring these things like semiconductors. आपने टाटा का तो भी सुना ही होगा. तो I think this is only a matter of time. अब I understand, देखिए जो भी हुआ, अब मैं भी पढ़ रहा था 1980s में कोई फायर लगी थी, उससे पहले हम चिप्स बनाने शुरू कर रहे थे. We were ahead of Korea. फिर कुछ फायर लगी और हमारा बंद हो गया. तो हमारे साथ 2 ट्रेजेडी रही हैं कि एक तो हम इंडिया में ना प्रॉब्लम होते ही घबरा जाते हैं. तो वो फायर लगी, हमने दोबारा कभी खोलने की नहीं सोची एज अ कॉर्पोरेट, एज अ गवर्नमेंट, समाउ आई डोंट नो क्यों. एज वेल एज यू नो, वो CIA वगैरह ने होमी बाबा जी के साथ क्या किया और सबके साथ क्या हुआ, वी ऑल नो. तो वो सब इनिशियली 60s, 70s, 80s में रहा. द गुड थिंग इज थिंग्स आर चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट ट्रैक. बिग ग्रुप्स वांट टू इन्वेस्ट. मैं ये बता रहा हूँ, ये जो एक ओल्ड इकोनॉमी ग्रुप हैं, इनके अंदर वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पर्सन, उन्होंने डे टू डे ऑपरेशंस छोड़ के ही इज फोकसिंग ऑन सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल. तो काफ़ी चेंज हो रहा है ग्रुप में. बट अब प्रॉब्लम वही है कि इट विल टेक टाइम. दीज आर नॉट समथिंग आपने 2 साल 6 महीने में शुरू कर दिया. दिस विल टेक टाइम. दूसरा, वो जो आपकी बैटरी लाइफ वाला है, वो मैं इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ. सो वन ऑफ माई कजन्स इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट पीपल इन एरोनॉटिक्स इन अमेरिका. तो ही ज्वाइंड लास्ट ईयर अ कंपनी विच वॉज क्रिएटिंग फ्लाइंग कार. सो eVTOL कहते हैं इनको. तो अभी भी सो ऑल दी पीपल इन द फैमिली वॉज सेइंग, यार ये तो $1 मिलियन कम से कम साल की सैलरी कमा रहा होगा. तो मैंने ऐसी बात करी, तो ही सेड, यार मेरी तो स्टार्टअप बंद होने वाली है एंड आई एम लुकिंग फॉर सम अदर ऑप्शंस. तो मैंने कहा क्यों? तो ही सेड 20 मिनट उड़ती है हमारी फ्लाइंग कार. वी वेंट टू डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन अमेरिका. वो बोले 20 मिनट वाली कार का क्या करें? तो पॉइंट ये है कि दैट इज़ अ प्रॉब्लम फ्रॉम US टू इंडिया, सब जगह है. दैट इज़ आई थिंक अ बिगर चैलेंज इफ सर वुड बी नोइंग टेक्निकली बेटर. बट वहाँ भी वही प्रॉब्लम है कि आपकी, क्योंकि वो कम टाइम होता है, दैट इज स्टिल अ चैलेंज. आई थिंक
जो चैलेंज सबको पता होता है, मैंने टेक्नोलॉजी वो तो सॉल्व होगा ही ओवर पीरियड वो टाइम, सॉल्व हो जाता है ना, क्योंकि जो सबको पता होता है वो जनरली सॉल्व हो जाता है. प्रॉब्लम वो नहीं सॉल्व होती जो लोगों को दिख नहीं रही होती. वो तो काम हो ही रहा है, मतलब there's a lot of- काम हो रहा है. प्रॉब्लम यही है कि हजारों करोड़ का गेम है, इट टेक्स टाइम. तो and it's a most capex heavy activity. I'll just tell you something about it. Okay, so if you look at the value chain of the semiconductor fab itself, right? So there is a CMOS designed for 28 nanos and below, right? So if you see by volume, the market as of now is 28 nanos plus, almost 70%. But by value, it is almost 35%. You think India can come to angstroms, like the companies are looking at less than 1 nano also. See, we don't, I mean, this is a very high capital entry barrier that comes to the semiconductor fab. So if you see the intention with the country, we almost have 13 projects, 1 fab and ATMP projects that have been rolled out for semiconductors. So packaging, we are doing pretty well. But when it comes to the design part of it, the design automation as well as the fab, there's a long time to go. And imagine we strategically must focus right now on 28 nano plus, because that's where the market is and only competitor is China. And progressively, I'm sure we will improve. Of course, I mean, we and China were together 50 years back. Now they are second and we are third, but the gap is too much to handle. I mean, the interesting thing is that China is sunsetting a lot of industries that India is saying that China plus one में हम करेंगे, but probably that's a little bit of a issue. क्योंकि वो तो sunset करे आ रहे हैं कि chemical हम नहीं बनाएंगे, polluting industries नहीं बनाएंगे, और India कह रही है हम बना लेंगे. So it's a little bit of a conundrum there. I think we should be moving up the value chain in terms of semiconductor design and so on and so forth, as sir said. But it is getting there. It's a lot of capex game. मतलब इतना आसान नहीं है कि एक फैब में आपको 2-3 बिलियन डॉलर लग जाते हैं. काम इंडिया में हो रहा है फॉर MNCs डिजाइन एक्सेट्रा. इट इज ओनली अ मैटर ऑफ, जैसे मैं जिस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, वो बेसिकली इंडिया में टैलेंट इज देयर. दे आर जस्ट सेइंग कि वो टैलेंट वांट्स टू क्रिएट देयर ओन स्टार्टअप्स एंड जॉइन दीस ग्रुप्स एक्सेट्रा. Anyway, sir, we'll take a couple of more questions, I guess. I'm Dinesh. Oh, you have a presentation as well. After that, we'll have the presentation, and then I think sir has to leave by about 12:10. And so do you? Yeah. So we'll take a couple of more questions, then we'll have the presentation. In the meantime, sir, if you want to leave, absolutely not a problem. We'll wrap up after that, sir. Thanks for opportunity. I am Dinesh. Yesterday, I was in a semiconductor knowledge session. So ISM 2.0, which has been announced, and the policies for which will be declared soon. In that means the government of India is trying to create an ecosystem, inclusive ecosystem, in which MSMEs also can come, say, with low barrier investment, not very high investment. My idea to question you, sir, here is that means for MSME level, where say $2-3 million, not hundreds of $million. In that investment, say packaging, as we call about OSAT, that is highly, investment intensive. But say in low barrier investment, still some packaging, advanced testing and packaging solutions are there. So for MSMEs, what components for the drones, for the space tech, for the defense tech, they can manufacture and supply when the ISM 2.0, it takes shape real. So, okay, see, like you have said, coming to the real fab and the systems level, the big large MNCs are into it, and we are also trying to set up. But if, in fact, we made a proposal to the government of MP, which is like making MP electronics manufacturing hub in the next 5 years. So that has 3 components to it. One is the large scale manufacturers, but they cannot really survive without the ecosystem which is of the MSMEs. But unfortunately, MSMEs also, they are into low wage manufacturing right now. So they also have to really up their game and then get into the assembly lines and the low value component manufacturing and all. They are still doing it. Memories and all, they're already there. But when it comes to the deep tech, when it comes to the high skill, high value manufacturing and all, I think MSMEs, neither they have the wherewithal or they have the ecosystem which is actually prospering to that. But yeah, whenever this kind of ecosystem develops for the semiconductor, I'm sure MSMEs have a very important role to play. And then there are a lot of schemes of the government which are actually, in fact, state governments are giving a lot of incentives for the MSMEs to take on multiple roles when it comes to the semicon also.
Excellent. And so I. One short interruption here. So means which ecosystem, say like PhD Chamber of Commerce, means which can create an ecosystem to bridge that the requirements of the drone manufacturers and to come up with the supply lines that okay, these are the components which can be conveniently manufactured, designed, manufactured, researched and developed by MSME sector, by inclusivity, by policymakers. I don't know, PhD chambers do we have some kind of a study where we are looking at what components MSMEs can target? Not exactly, but working closely with So I think such a bridging gap is essential, and this bridge gap can boost. no, certainly point well taken. Yeah, that's the way to go forward. That's right. Thanks. Thank you so much. If there are no more questions, I think we'll probably wrap up with the presentation from SIDBI, and ma'am would like to showcase something. So totally your call, sir. If you want to stay for the presentation, both of you, or totally your call. Okay. How long is your presentation, ma'am? Okay. All right. Please. All right. Yeah. So let's give a huge round of applause to Ms. Singh, and thank you so much for taking out your valuable time. Really appreciate, and thank you so much once again. There's a memento to be given as well, sir. If you can just. In general, I'm really sorry. I really have engagements. But I thought I really don't want to bore you also. Sir. And round of applause for Dr. Saab as well. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. So please, kindly, everyone in the room, please wait for the presentation from SIDBI, and then we'll have the closing remarks by Dr. Singh. On lending by SIDBI, so most of you will be interested. Yeah, ma'am, please. No, it's not working. It's not working? Can we test the mic, please? It's working. Okay, Good morning to all distinguished dignitaries, industry leaders, innovators, entrepreneurs, members of academics, and friends. It's a privilege to be part of Bharat Drone and Robotics Manthan 3.0, a platform that reflects India's growing ambition to become a global leader in drones, robotics, and deep technologies. The theme of today's session, Future Skill for Viksit Bharat, is both timely and significant. As India progresses towards the vision of Viksit Bharat, technology will undoubtedly be one of the strongest pillars for our economic transformation. Drones, AI, robotics, and autonomous systems are no longer technologies of the future. They are becoming integral to agriculture, healthcare, logistics, infrastructure, defense, disaster management, and smart cities. However, technology alone cannot create transformation. It is the people behind the technology, the entrepreneurs, the innovators, the engineers, technicians, and skilled workforce who truly drive the change. This is where SIDBI plays the vital role. As the principal financial institution for promotion, development, and financing of the MSME sector, SIDBI believes that India's innovation story must be built on strong, competitive, and technology-enabled MSMEs. Our mandate extends beyond providing finance. We work to strengthen the entire entrepreneurial ecosystem by supporting startups, facilitating innovation, enabling technology,
adoption and promotion of sustainable enterprise growth. India today has one of the world's largest startup ecosystem, with deep tech startups increasingly addressing the complex challenges through indigenous innovation. Many of the enterprises are developing cutting-edge drone technologies, AI applications, embedded electronics, and advanced manufacturing solutions. Yet every innovative idea requires patient capital, mentoring, market access, and institutional support to scale up successfully. SIDBI has consistently partnered with ecosystem stakeholders to bridge these gaps through direct financing, venture capital support, credit enhancement, incubation initiatives, and collaboration with state governments, academic institutions, and industry bodies. Equally important is the need for future-ready skills. Financing innovation must go hand in hand with financing capability. The MSME sector will be at the heart of this transformation. MSMEs possess the agility to innovate rapidly, customize solutions, and generate employment at scale. By integrating advanced technologies into manufacturing and services, they can become a globally competitive while contributing significantly to India's export ambitions. From the direct lending perspective, I would like to highlight the few schemes that are available with us. Okay. So as I told you, for patient capital, we are investing directly through incubators, indirectly through AIFs, and through the mode of venture debt also. We have separate teams working for that. From direct financing part of view, we are financing direct machineries, all the project finance. Project finance can be in the form of, expansion. It can be in the form of greenfield investments. The requirement can be of working capital, and as far as sustainability is concerned, green finance is a new terminology that is, also under consideration, and we are working on the same. The first scheme is Express. Express is for machinery financing, where the MSMEs have 3 years of operations. 3 years of operations, GST requirement, Udyam registration is must. We can give loans up to 3 crores within 24 hours, up to 5 crores to our existing customers. That can be sanctioned. This is done through straight-through processing model, in which automatic, in principle sanction is being given to the customers. Speed. Speed is the growth story. Here the requirement, the minimum requirement is 3 years of operations with cash profits, and the loans can be given up to rupees 15 crores. We cover here machines and the equipments. Here the project financing requirement can be done up to 100% by taking 25% collateral in the form of FD. The flexible repayment tenure up to 7 years is easily available. Direct credit scheme. Direct credit scheme caters to expansion as well as the greenfield projects for all the capex needs. It can be for land, building, project funding, mix of anything. So the loan can be given up to 10 years and up to 100 crores. 75% of the project cost is being funded in here. Stapan. Stapan, when you see you can take an example of a trader. He is having experience and he wants to set up a new unit. He can go under this scheme. The loan can be given up to 9 years. Amount is 100 crores and project cost can be covered up to 75%. Arise.
the unit is already running. It is in operation for 2 years and wants to go for further expansion for land, working capital or the machinery finance, then it can be given under the Arise scheme, where the loan amount goes up to 100 crores. For the smaller needs, we cover, you know, for the machines, the express requirements under the express scheme, and then up to 15 crores under the speed scheme. And then there are models like Sthapan, Arise and direct credit scheme. Working capital, I have already told you, we can give it in the 3 forms. It is in the form of GST Sahay, where you are already working with your working capital banker, and for project, invoice-based financing scheme, this is on-tap financing scheme, where GST invoices are being financed within 30 minutes. You can take it on the basis of, you know, seller-based or the invoice, purchaser invoice-based. You can avail it both the ways. It will be given as a top-up facility for your working capital requirements, given through the, you know, the gap. The gap is there in your balance sheet. DigiCash is another product wherein working capital requirements are being served up to rupees 5 crores, and the cash, the working capital is given in the form of OD within, you know, within 2-3 days. So working capital requirements, we have tie-ups with IDBI Bank, City Union Bank, Bank of Baroda, and Yes Bank, where you avail, where you use their platforms, and working capital requirements are met by us. DigiCash, I have already told you. Green finance. Green finance, sustainability is the need of the hour. For MSMEs to scale up, you have to take care of, you know, requirements. You have to scale up. You have to be carbon efficient also. And while catering to export, you need to take care how many you need to declare how many carbon emissions you're already making. So for that, we have green energy efficiency schemes, wherein we take care of your requirements and loans are being provided at concessional rates. Aditi. Aditi is the scheme in Delhi NCR, wherein it is for a particular sector, for the scale up of foundry and forging units. Her interest subvention is given at 3% for medium enterprises and 5% for micro and small enterprises. Edge. Edge is a product wherein your DG set, you can upgrade your DG set in easier forms and get it, you know, get the loan within 2 days, and the assistance is up to 3 crores. End-to-end energy efficiency scheme is a part of green finance scheme, wherein we cover solar PV plant in case you want to buy energy efficient machines, and the unit should be in operations for 3 years. The assistance can be provided up to rupees 15 crores. There are 2 models for funding it. You can go for 100% financing model or 75%, the way you wish. Flexible repayment is up to 7 years. Secured business loan. For your immediate needs, you want to expand, you want to go for marketing, you want to go for R&D, you can take product under this head. This is secured business loan, wherein the unit has 3 years of operations and net profit should be there in the last financial years. Loans can be provided up to rupees 20 crores, and it is available in foreign currency also. Arogya. Arogya is the units which are catering to pharmaceutical industry. The requirement is, the product is made specially for them. In case they want to go for expansion or setting up a new unit, soft loan component is provided so that their contribution is decreased, and it is given to MSMEs who are working in Ayurvedic and homeopathic streams. Loans are given up to rupees 100 crores, and the flexible repayment schedule can be made up to 9 years. Cash defense. Cash defense we have already discussed. This is for catering to the to the MSMEs who are catering to defense sector, who are supplying to them, and the work order is being funded.
More. More is a scheme wherein we cater for modernization and renovation of restaurants and hotels. These are cash light products, so require different angle while financing. So this is a special product made for them, and loans can be given up to rupees 5 crores. Nirman is for machinery equipment. The units which are working in infra category can avail loans in Nirman scheme, and the assistance can be provided up to rupees 2 crores with flexible repayment period up to 5 years. Shuffle is for setting up a facility in HSIDC. It specially caters to Haryana, and the unit should have 5 years in operations and net profit should be there in past 3 years. The loan flexible repayment period is given for 6 years. PCS is a scheme wherein our existing customers are served for their immediate requirements or any requirements in terms of enhanced working capital, their marketing requirements, their R&D requirements, or in case there is a gap. In case there is a gap they are looking for. So we have 3 options here: silver, gold and platinum. This is only for our existing customers wherein wherein financing is being provided to them. GST Sahay we have already discussed. Thank you. Sure. For, say, setting up a semiconductor plant, something for drone, under CGT MSc, if it is a new company, say Greenfield, which wants to come up under CGT MSc, then what are particularly suitable to that focus? Sir, we can discuss it separately also, but yes, for setting up a new greenfield enterprises, we can give debt. So we need to take care of, how the project report is made, what are your market expectations, how you are going to serve the debt. While giving finance in the form of debt, the main key point is how the debt is going to be served. The the repayment should come out through the project. If it is a viable project, then it is always a doable. Under CGT MSc? Yes, it can mean anything. My name is Arun. I just wanted to have discussed a lot of loans and all these type of schemes. But is there anything for innovation or R&D? I'm talking about not only funds. It should be basically, is it a grant or a loan? So whatever I have discussed here while standing on this podium is only about debt. Debt is always to be repaid back. When it is to be a grant is always given by state government or the scheme है क्या? Innovation fund जैसे बात हो रही है, R&D अगर आप R&D ही नहीं करोगे, research and development ही नहीं करोगे, तो product बनाने के बाद तो छोड़ दीजिए आप लोगों को बहुत time लगेगा. Sir. So that is being looked after by state governments. We are lenders. Okay, got it. Yes. Means you have only loans. We have loans. We are investing in startups through AIF's route. We are investing in startup through venture debt route also. Okay. We are investing in startups along with incubators also. We are entering. We are giving the capital in various forms. Startup India is a grant scheme as well as DST has some grant schemes. So you can explore that. Especially with drones, तो DST वाले में होगा. Startup India 20 lakhs तक देता था. अब 20 lakhs तक देता था. The existing scheme के ज़्यादातर पैसे खत्म हो गए. अब नई स्कीम आने वाली है. Sir, 20 lakhs में आज की डेट में जैसे मैं Just for prototype आप कर सकते हैं. हाँ, पर ग्रांट इतना ही देते हैं बाकी. हाँ, वो तो है. नहीं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ. सो आई हैव रिसर्च्ड अ लॉट, आई हैव रिटन अ बुक आल्सो. अभी मैं बताऊंगा तो. आप कॉमर्स एंगल से बैठ करके देख रहे हैं. हाँ. और मैं इंजीनियर हूँ. तो मुझे तो इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी ना. आई अंडरस्टैंड. तो इंजीनियरिंग करने के लिए तो मैं हवाई जहाज पर जा करके नहीं बोल सकता कि आप प्रैक्टिसिंग इंजीनियरिंग. नहीं, आई विल शो यू
So there is a best practice you can use. I will be showing in my presentation. प्रॉब्लम वही है कि 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए वो चना से आप चाहोगे कि यहाँ पर स्काई रोड का रॉकेट बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इस चीज पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान लगाना चाहिए कि लोन तो तभी यूज करेंगे लोग, मैन्युफैक्चरिंग में तो तब आएंगे ना जब हम कुछ बना रहे होंगे। ISM 2.0 है ना सर, जिसमें अभी सर ISM की सर सेमीकंडक्टर की बात छोड़ दीजिए, सेमीकंडक्टर 3000 करोड़ से लेकर के 10,000 करोड़ का धंधा है, वो आप जान नहीं रहे हो इसलिए आप उस पर बात कर रहे हो। MSME कुछ भी नहीं कर सकता सेमीकंडक्टर में। I have a question. Yeah, sure. Yeah. What is the eligibility criteria for the cash defense scheme? So it is based on the purchase order that you have already. Yes. Let's say I have a purchase order of about 10 crores, but we don't have much of financial history, which is a typical case with all the startups. Yes, it is a new entity, but you need to be registered with Udyam, and you need to bring the work order. We need to confirm the work order, then we can take it. No, I have the work order. So my question is, to be very precise, I don't have much of financial history. Like startups में, I have an order of 10 crores, but last year का मेरे पास कुछ work order नहीं है, तो उस केस में, would you be processing under the cash defense scheme? सर आपको किस मिनिस्ट्री से ऑर्डर मिला है? Ministry of Defense. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से डायरेक्टली मिला है? Correct. And you don't have any manufacturing facility? No, I have manufacturing facility. I have already delivered to the Northern Command as well. See, my question is basically I have been to the SIDBI offices. अब उसमें basically I applied for the scheme, and what I am getting back is like I need to have some in eligibility criteria में कि मेरी जो financial health of the company has to be in so and so. Yes. Which is I should have delivered a contract of let's say 10 crores. अब 10 करोड़ का ऑर्डर एक स्टार्टअप के लिए मैं कहाँ से? Sir, we can see if we can, if we can go for relaxation. Please, we will take it separately. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now Saurabh has a short presentation as well. So request you to just welcome him with a round of applause. Good afternoon, everyone. So I am sharing you some of the slides from my presentation I do for Startup India in Startup Masterclass. So I have also written a book called Startup Masterclass, which is available on Amazon. So I will be covering a few slides. So this is the whole presentation. So 2-3 slides इसलिए क्योंकि there are some younger people who should know what is entrepreneurship. So देखिए, entrepreneur is somebody who can do more than what is thought possible for less than thought possible. ये definition दी थी जॉन डॉयर जो गूगल और अमेजन के one of the first investors थे. तो अगर आप एक और एक 11 कर सकते हो तो आप entrepreneur हो, एक और एक 2 कर रहे हो तो businessman हो. So that is a leap of change in your mind कि एक और एक 11 करना 2 नहीं करना. तो पहला तो वही चेंज है. दूसरा, स्टार्टअप इज ऑल अबाउट व्हाट इज अ स्टार्टअप. स्टार्टअप इज एनी ऑर्गेनाइजेशन विच बिल्ड्स अ प्रोडक्ट और अ सर्विस अंडर अनसर्टेनिटी. ये लीन स्टार्टअप बड़ी फेमस बुक है, उसकी डेफिनेशन है. तो देखिए, सबसे पहला मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये सब क्यों मैं थोड़ा ज्ञान शेयर कर रहा हूँ. तो आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया जिसने मोबाइल ऐप्स बनानी शुरू करी. मैंने 2002 में मोबाइल ऐप्स बनानी शुरू करी. 2003 में माई फर्स्ट बुक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के ऊपर मोबाइल फ़ोन प्रोग्रामिंग थी. दैट गॉट रिलीज्ड. आई वॉज वर्किंग विद नोकिया. ये जो नज़ारा आपने सुना होगा, नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ है, तो देवर सप्लाइंग गेम्स अलॉन्ग विद मी. मतलब एक वेंडर मैं था, एक वो थे. अब अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट स्केल, बट फॉर्चुनेटली आई मेट मिस्टर विजय शेखर शर्मा समवेयर अराउंड 2007-8 मिले थे. तो मोबाइल मंडे एक इवेंट हुआ करता था जहाँ सारे हम मोबाइल वाले ऐप्स बनाने वाले जाते थे. तो वहाँ विजय मिले. तो जैसे आप लोग आज यहाँ आए हो तो सब बड़े नेसेंट स्टेज पे हो, सोच रहे हैं कुछ लोग. एंड मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जो मोबाइल ऐप्स के साथ हुआ वही ड्रोन्स में और जो फिजिकल एआई जैसे वो कह रहे थे होगा. एंड बहुत सारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आप सीख सकते हो. जो आपकी प्रॉब्लम है वो हमारी भी थी. तो हर चीज़ का ना जुगाड़ है. देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे समझ आया कि स्टार्टअप के लिए कुछ लाइन्स होती ही नहीं है. अब वो इसलिए नहीं होती हैं कि ठीक है आप स्टक इन द मिडल भी हो जाते हो कि पैसे नहीं है. बहुत ज़्यादा ग्लैमर है, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके जाओगे सरकार दे देती है. 2 करोड़ आपको कोई नहीं देता है, 20 लाख दे देती है. तो कई बार स्टक इन द मिडल वाली सिचुएशन भी होती है. मुझे वो पैसा उसके लिए
नहीं, मैं अभी वही आपको बताता हूँ। तो 2002 में जब मैंने मोबाइल ऐप शुरू करी तो नोकिया वॉज प्रमोटिंग कि आप मोबाइल ऐप बनाओ, हम आपको कनेक्ट करते हैं, जैसे आज भी स्कीम्स होती हैं इंक्यूबेटर्स की गवर्नमेंट की, कि नोकिया वॉज सेइंग हम आपको कनेक्ट करते हैं। तो उनको मैंने कुछ आइडिया दिया, तो कह रहे नहीं इसमें ये ऐड और करो, हम आपको लॉरियल से मिला देंगे, यश चोपड़ा जी से मिला देंगे। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज। अब हम तो यहाँ बैठे थे दिल्ली में, तो हमें तो नाम भी सुन के बड़े अजीब लगा करते थे, इतने बड़े। तो 2002 की बात है। तो उस समय मोबाइल ऐप्स, आई वेंट टू CNBC एंड आई सेड मोबाइल ऐप्स आप बना सकते हो, एंड दे सेड बॉस अभी तो कोई SMS यूज़ नहीं करता, आप मोबाइल ऐप उठा के लिया है। आई वेंट टू ETV वाले बोले आप हमसे लाइसेंस ले लो। मैंने कहा मैं तो स्टार्टअप हूँ, मेरे पास पैसे थोड़ी ना है, मैं तो ये चाह रहा हूँ आप ऐप बनाओ। तो जो मैं आज भी समझ नहीं आता मुझे कौन बनेगा करोड़पति, उस एक आदमी के साथ ही क्यों खिलाते हैं अमिताभ जी। पैरेलल में आप मोबाइल ऐप से खिला सकते थे। समहाउ आई डोंट नो दे हैव थॉट अबाउट इट और नॉट। 20 साल पहले मेरे पास आइडिया था, 20 भी नहीं, 2003 में आइडिया था मेरे पास ये कि मोबाइल ऐप आप पैरेलल में खिला सकते हो। समहाउ मेनी थिंग्स वर्क, मेनी थिंग्स डिड नॉट वर्क। तो बहुत कुछ आप सोचोगे जो हो सकता है। तो मैंने ओवर ईयर्स एक चीज़ देखनी शुरू करी कि बहुत लोग नहीं स्केल कर पाए, विजय स्केल कर पा रहे थे। तो अब मेरे पास क्वेश्चंस थे, तो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। एंड एक दिन ऐसा आया 2015 में, AI को अपना गुरु बना लिया मैंने, कि अमेजन पे एक बुक ऑर्डर करी, इट शेयर्ड सेकंड बुक, थर्ड बुक, वो करते करते मैंने 50 बुक्स पढ़ ली। एंड आपको लगता होगा बुक्स थ्योरेटिकल हैं, बट वो इतना ज्ञान आया, लीन स्टार्टअप टाइप की बुक्स की बात कर रहा हूँ। एंड आई रियलाइज कि यार लक्ष्मी जब आएंगी, सरस्वती माँ बड़ा आशीर्वाद दे रही हैं। एंड एट दैट पॉइंट 50 बुक्स मैंने पढ़ी, नेक्स्ट ईयर फिर 50 पढ़ी। एंड फॉर्चुनेटली एट सम पॉइंट विजय कॉल्ड मी एंड ही सेड कि मेरी कंपनी ज्वाइन करो एंड लीड दी स्टार्टअप प्रोग्राम। तो जितना भी पढ़ा था मैंने, 200 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी अपनी बुक लिखने के लिए, स्टार्टअप मास्टर क्लास जो मैंने बुक लिखी, जिसके स्लाइड्स आपको दिखा रहा हूँ। तो जो मैंने वो 200 बुक्स पढ़ी, उसके अलावा बिकॉज आई वॉज रनिंग द स्टार्टअप प्रोग्राम फॉर पेटीएम एंड आई वॉज रिपोर्टिंग टू विजय, तो मैंने सारा चेक किया, क्रॉस चेक किया। मैंने कहा जो पढ़ रहा हूँ क्या ये पेटीएम में एप्लीकेबल हो रहा है, क्या ये विजय ने भी पढ़ा है। तो विजय सेड कि मैंने लीन स्टार्टअप पढ़ी नहीं है, बट मैं सारे सूत्र एप्लीकेबल करता हूँ इन माई डे टू डे डिसीजन मेकिंग, एज वेल एज जितने भी इन्वेस्टर्स वगैरह मिल रहे थे सबके साथ। तो आई बेसिकली क्रॉस चेक्ड एवरीथिंग। तो मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, वी डोंट हैव टू मच टाइम। तो एक ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरा स्लाइड है, एंड आई टेक दिस मास्टर क्लास फॉर 4 आवर्स। 23 अगस्त को नेक्स्ट है। स्टार्टअप इंडिया की साइट पे आप जाके एक पेटीएम बिल्ड फॉर इंडिया का बैनर है, उस पर क्लिक करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये कर सकते हो। तो बेसिकली देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहा आपको फंडिंग कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी, बट ये जनरल प्रोसेस है कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टार्टअप इज प्रोडक्ट। एंड ये मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ मैं, जिसमें लेफ्ट राइट की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, सेकंड पीपल, थर्ड इज परचेजिंग पावर। तो फंडिंग इज थर्ड। आपको ये दिमाग लगाना है कि प्रोडक्ट इज वॉट योर स्टार्टअप एग्जिस्ट फॉर। तो जैसे पेटीएम में आपको क्या लेना देना, मैं हूँ या नहीं हूँ, फंडिंग है या नहीं, जब तक पेटीएम ऐप चल रही है काम हो रहा है। तो प्रोडक्ट, पीपल, परचेजिंग पावर। तो ये मैंने विजय को भी देखा कि विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के फाउंडर हैं, कहते नहीं है बट दिस इज हिज प्रायोरिटी ऑफ वर्किंग। तो प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट बनाने के लिए लोग चाहिए, पीपल। थर्ड इज परचेजिंग पावर, आपको फंडिंग चाहिए। तो हमें लगता है स्टार्टअप इज ऑल अबाउट फंडिंग, बट फंडिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, एट सम पॉइंट इट इज रिक्वायर्ड, बट वही फिर वो पॉइंट है कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में प्रोडक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड आते हैं, सबसे पहले आपको सर्च करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था, देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस जो आप सर्च कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि LLM बनाना है जिसमें 10,000 करोड़ रुपए लगाने हैं। देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस, एंड ऑब्वियसली आप कई बार ये भी होता है कि एक बिस्टोन ट्विटर के फाउंडर थे, ही सेज यू हैव टू वर्क 10 हार्ड ईयर्स टू बी एन ओवरनाइट सक्सेस। एक एग्जाम्पल मैं क्लियरली विजय का देता हूँ। 2012 में आई वॉज सिटिंग विद मिस्टर विजय शेखर शर्मा, ही सेड, ये मैं पेटीएम इंट्रोड्यूस कर रहे थे मुझे कि पेटीएम क्या होता है। 197 कम्युनिकेशंस में आई वॉज मेकिंग गेम्स फॉर देम। तो ही सेड 10,000 करोड़ का ये ब्रांड होगा। एंड आई वॉज थिंकिंग इन माई माइंड, मैंने कहा विजय तो थोड़ा अंबानी की तरह सोच रहे हैं, 10,000 करोड़ का कैसे होगा, 200-300 करोड़ की स्टार्टअप है और 3 साल में ही वॉज सिंग। 2012 में मोदी जी कहीं नहीं दिख रहे थे पीएम बनते हुए। तो स्टार्टअप को पहले सर्च करना, तो व्हाट विजय डिड, एंड ये लीन स्टार्टअप भी कहती है, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विद लॉट ऑफ थॉट्स। तो विजय ने क्या करा, एक साइट बनाई वीडियो पिंड, जो कुछ हद तक यूट्यूब की तरह थी। उन्होंने कुछ गेम्स बनवाए मेरे से, जिस वजह से मैं वहाँ बैठा था।
As well as he experimented with 5-6 thoughts and he realized यार ये कुछ scale नहीं हो पा रहा है, competitive advantage Paytm में, and Paytm was not something जो तुक्का लगा, वो एक सोची समझी 5-6 चीज़ें lean startup approach से ही experimented and then he realized कि ये सबसे ज़्यादा scale हो सकता है, वो बनाई। एंड 2010 में शुरू हुई थी, 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुई तो वो वही था कि यू हैव टू वर्क 10 हार्ड ईयर्स टू बी एन ओवरनाइट सक्सेस। तो 6 साल हो चुके थे। इंटरेस्टिंगली विजय की कंपनी में 100 करोड़ रुपए पड़े थे, क्योंकि 197 एट दैट टाइम ऑल्सो वॉज रिलेटिवली डिसेंट साइज कंपनी। ही वेंट टू दी बोर्ड विद दिस आइडिया ऑफ पेटीएम। अब आप सोचिए, गवर्नमेंट नहीं दे रही, सिडबी नहीं दे रही, वो ठीक है समझ आता है, उनकी अपनी कंपनी नहीं दे रही। ही वेंट टू दी बोर्ड, बोर्ड सेड ये बेकार आइडिया। क्यों? 2 रीजन थे। दे सेड नोबडी हैज स्मार्टफोन्स इन इंडिया इन 2010-11 एंड देन सेकंड थिंग, बोर्ड सेड सब 2 नंबर का पैसा यूज करते हैं इस देश में, कौन तुम्हारे वॉलेट को बैंक से लिंक करके यूज करेगा। बट ही यूज इज, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश में इंजीनियर्स के साथ एक प्रॉब्लम ये है, IIM में आप जाते हो तो आपको बात करना आपका चेक करते हैं, IIT में जाते हो तो चेक नहीं करते। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है इंजीनियर्स में, जो नहीं चेक करते हैं जब वो इंजीनियरिंग में आप एडमिशन लेते हो। तो विजय यूज इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ही सेड आप मेरे 5 करोड़ के शेयर ले लो पर कंपनी में 5 करोड़ दे दो, दिस इज द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, आई हैव टू बेट ऑन दिस। आपको नुकसान नहीं होगा एज इन्वेस्टर, बट मैं नुकसान 100% कवर अप करने को तैयार हूँ। एंड बोर्ड रियलाइज कि यार अगर विजय अपने पैसे देने को तैयार है तो कुछ तो दिख रहा है, एंड ऑब्वियसली 100 करोड़ भी ही हैड अर्न। तो बोर्ड गेव दैट मनी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, आपको तो फिर भी बाहर से पैसे लेने हैं। तो दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो आपको सर्च करना है एंड देन यू हैव टू फाइंड वेज कि यार कौन सी चीज़ ज़्यादा चलेगी। एंड जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो टीवी पे दिख रहा है, जो इकोनॉमिक टाइम्स में दिख रहा है, जो सोशल मीडिया पे आजकल दिख रहा है, दैट इज़ नॉट द मोस्ट ग्लैमरस थिंग टू डू। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा। मेरा एक कज़न था, तो 2015 की बात है, इस साइड यार ये पेटीएम आ गई है, हम भी ऐसे आइडिया क्यों नहीं सोच पाते। तो मैंने कहा तेरे को आज दिख रहा है ना 2015-16 में, वो 2010 से लगे हुए हैं। और जब तू 2010 में तू सोचता था तो कहता है ये तो कॉमन ही नहीं आइडिया, बिकॉज लोग पागल कहते थे उस समय कि ये काम क्यों कर रहे हैं। तो आप ये समझना शुरू करिए, यू हैव टू थिंक। अब देयर इज़ अ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वो कवर करता हूँ वहाँ, अगर आप 23 अगस्त को आएंगे तो उसमें ऑनलाइन। तो देयर इज़ अ इंटेलिजेंस कॉल्ड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है फ्यूचर देख पाना, हवा का रुख देख के पहचानना फ्यूचर में क्या होना है। तो एनी टेक्नोलॉजी शुड हैव दैट। एलॉन मस्क इज एबल टू सी, विजय शेखर शर्मा इज एबल टू सी, इवन आई वाज एबल टू सी इन 2002 कि मोबाइल ऐप्स विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस इन फ्यूचर। तो आपको ये देखना है कि वेयर इज द नीश। डोंट ट्राई टू क्रिएट अ सर्वम, डोंट ट्राई टू क्रिएट अ नॉर्मल प्लेन वेनिला ड्रोन कंपनी, वो 100% हारेगी। और खासकर मैं आपको टेक में बता रहा हूँ, बिकॉज टेक की कॉमोडिटाइजेशन बहुत फास्ट होती है। तो एनीबडी क्रिएट्स वन टाइम, दिस पर्सन कैन स्केल। तो और फर्स्ट आने में एज स्टैटिस्टिक्स से अगर 50 आदमी की क्लास है तो फर्स्ट तो एक ही आएगा ना, बाकी तो 49 तो सेकंड थर्ड ऐसे ही आएंगे। तो ट्राई टू फाइंड निशेज, देयर आर एन नंबर ऑफ निशेज, जो मुझे बाद में समझ आया ओवर 20 ईयर्स, यार हाँ, मैं भी तो कर सकता था, मैंने कभी सोचा ही नहीं। एग्जाम्पल एस्ट्रोटॉक, मेरे मामा जी ज्योतिषी थे, अगर मैं उनके पास जाता एस्ट्रोटॉक बनाता तो आज जो एस्ट्रोटॉक की हंड्रेड्स ऑफ करोड़ हो रहा है वो मैं बना सकता था मोबाइल ऐप्स में। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, देयर इज अ कंपनी, अभी मैं मिला फाउंडर ऑफ AVML, आपने सुना होगा ड्रोन्स की। तो दे आर यूजिंग ड्रोन्स फॉर स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड इन विलेजेस। तो देर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो आप देख सकते हो। और आप जब सर्च करने लगोगे ना, प्रॉब्लम पता क्या होती है हमारे देश में? हमारे देश में प्रॉब्लम ये होती है कि आपने करण और कृष्ण जी के बीच में कभी डिफरेंस अगर देखा हो, तो एक सीन था स्टार प्लस के महाभारत में। तो करण एंग्री यंग मैन है, वो कहते हैं मेरे साथ ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो हमारे देश का इंजीनियर, आपने नीट में भी देखा, हमारे देश का स्टूडेंट करण की तरह एंग्री यंग मैन है कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, मुझे एडमिशन नहीं मिला, मुझे प्रॉब्लम है। तो कृष्ण जी और करण की बात हो रही है, तो कृष्ण जी कहते हैं जो तेरे साथ हुआ वो मेरे साथ भी हुआ। तो कृष्ण जी बोले मेरे को भी महलों की जगह गांव में पाला गया, मेरे को भी प्रॉब्लम आई एडमिशन की। अगर आपको पता हो, सनातन धर्म में मानते हैं 16 साल में एडमिशन हुआ था उनका, जो उस ज़माने का गुरु जी के सामने उनको पढ़ना था। तो अब कृष्ण जी में और करण में यही फ़र्क था, जो आपने, अगर मैं आपको थोड़ा पर्सोनिफाई करके बताता हूँ, तो 3 इडियट्स में जो रैंचो के बीच में और चतुर के बीच में डिफरेंस था। तो रैंचो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था लोगों की, और चतुर चाहता था फर्स्ट आना। चतुर चाहता था कि मैं पैसे कमाऊँ इससे, चतुर सब कुछ चाहता था जो मॉनेटरीली चीज़ें मिले, और रैंचो चाहता था लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना।
तो आप जब प्रॉब्लम ढूंढने लगोगे ना, तो इंडिया में प्रॉब्लम ढूंढने की प्रॉब्लम नहीं है, एवरीबडी हैज़ 10 प्रॉब्लम्स, तो मिलियंस बिलियंस प्रॉब्लम्स हैं यहाँ, कम से कम प्रॉब्लम ढूंढने की प्रॉब्लम इंडिया में नहीं है। वी आर वेरी, मतलब हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे सामने इतनी अच्छी कंट्री में हम पैदा हुए जहाँ प्रॉब्लम की कमी नहीं है। तो ट्राई टू फाइंड अ प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग योर टेक्नोलॉजी, स्पेशली ड्रोन्स। और फिर आप जब जाओगे ना, तो एमएसएमई में आपको समझ आएगा कि यार ज़्यादा पैसे चाहिए ही नहीं। एक और चीज़, ये मोदी जी का काम है ये कहना है कि हमें सर्वम इंडिया में बनाना है। आई अंडरस्टैंड गवर्नमेंट का काम है, जैसे सर ही वॉज फ्रॉम गवर्नमेंट, ही वॉज सेइंग कि मधवेंद्र की ये गवर्नमेंट का काम है, आपका काम नहीं है। अगर आप बना सकते हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप मत बनाओ, बट अगर आप नहीं बना सकते तो आप उस रेस में मत जाओ जो 100% पता हारनी है। बट देयर आर एन नंबर ऑफ निशेज वेयर यू कैन विन विद योर 2 crores, 50 lakhs, 10 lakhs। एक और चीज़ मैंने बहुत पेनफुली समझी लाइफ में, आपको इनोवेट उतना ही करना है जितनी ज़रूरत है। अगर चाइना से सेमीकंडक्टर ला पा रहे हो और आपको चाइना नहीं रोक रहा है, तो आप उसको लाके मिनिमम वायबल प्रोडक्ट स्टार्ट करिए, बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना है, एंड मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को आइट्रेट करके मुझे फाइनल प्रोडक्ट मार्केट फिट पे फोकस करना है। आपका गोल इज प्रोडक्ट मार्केट फिट। पैसे आपको मिलेंगे प्रोडक्ट मार्केट फिट पे। आप किसी इन्वेस्टर के पास जाइए कि ये मुझे 5 crore रुपए चाहिए, बिना प्रोडक्ट मार्केट फिट के नहीं देगा एज अ स्टार्टअप। और प्रोडक्ट मार्केट फिट पे हम फोकस नहीं करते, हम क्या करते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली मीडिया सारा इकोसिस्टम आपको सर्वम बनाने के लिए मजबूर कर रहा है, तो जबकि सर्वम बनाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है इस स्टेज पे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आपको नीश ढूंढनी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस अपनी पैदा करिए, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, इफ़ यू वांट रिसर्च ऑन दिस मोर। मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, विद इन नेक्स्ट 5 years 100% आपको बैंगलोर, गुड़गांव, बॉम्बे में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे आपको आतंकवादी ड्रोन उड़ा के बिल्डिंगें फोड़ते दिखेंगे। 100% बता रहा हूँ। मैं 10 साल पहले लोगों को कहा करता था रिमोट वर्किंग होए करेगी, लोग जूम पे काम करा करेंगे। जब कोविड हुआ तो मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड है काफ़ी सीनियर, इसे जैन साहब आप 10 साल पहले बताया करते थे, आज ये वही हो रहा है। तो मैं बड़ा क्लियर, क्योंकि मैंने उनको क्लियर बताया, मैंने कहा 90% काम एक कंपनी में क्या होता है, मीटिंग होता है, जूम पे हो पाती है, तो टेक्निकली हो सकती है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 100% ये चीज़ें होंगी। आप और देखिए, आप कोई भी इंडस्ट्री खोल के देख लीजिए, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग नीशेज इन टेक्नोलॉजी विच आर चीपर टू डू। यू डोंट हैव टू क्रिएट। आप चाइना से ड्रोन लाओ, बेचना शुरू करो, एट सम पॉइंट यू नीड स्केलिंग, दैट इज व्हेन यू शुड मैन्युफैक्चर। आप सरकार की सुनना बंद कर दो, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकलिटी है। बिकॉज आपको 50 लाख में अगर ड्रोन कंपनी खोलनी है तो इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा, आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। बट यू विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग एट 50 crores, 500 crores, वो प्रोडक्ट मार्केट फिट के बाद होगा। देखिए जो प्रैक्टिकलिटी है, दैट इज प्रैक्टिकलिटी। तो सेकंड आपको फोकस करना है बिल्ड करने पे प्रोडक्ट मार्केट फिट, एंड यू हैव टू आइटरेट। एक शॉट में नहीं होगा, बिकॉज यूजर को जो चाहिए, आप पेटीएम का सर्च करके देखिएगा, जो पहला इंटरफेस था बिल्कुल थर्ड क्लास था, आज के इंटरफेस से कंपेयर करें तो किसी भी कंपनी का देख लीजिए। तो एवरीथिंग विल सक इनिशियली। इवन एलॉन मस्क शेयर्ड वन डे फोटो कि उनका जो पहला रॉकेट था उसका इंजन बड़ा खिचड़ी सा बना हुआ था, और जो थर्ड इंजन है वो बड़ा आपको अच्छा लगेगा देखने में। तो वो डिफरेंस वही है कि यू हैव टू आइटरेट, एंड फाइनली व्हेन यू हैव प्रोडक्ट मार्केट फिट, वेंचर कैपिटलिस्ट आपको पैसे देगा, तब ग्रोथ की सोचिए। बहुत सारे स्टार्टअप्स क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आई वेंट एज अ मेंटर टू IIT मद्रास, तो आई मेट अ स्टार्टअप, दे सेड सर हम 5 EVs बना रहे हैं और पैसे की कमी पड़ रही है। तो मैंने कहा एक EV कितने में प्रोटोटाइप बनता है, कह रहा है 1.5 लाख में। सर हमारे पास 5 लाख रुपए हैं। तो मैंने 1.5 लाख में फिर प्रॉब्लम है, सर हम 5 बना रहे हैं तो 7.5 लाख हैं, तो हमारे तो सारे पैसे लग गए, अब हमें फंडिंग चाहिए। तो 50% ऑफ प्रॉब्लम इन फंडिंग में, आई हैव बीन अ मेंटर फॉर मेनी ईयर्स, मैंने देखा है वो इसलिए है, वी वांट टू क्रिएट टू मेनी प्रोडक्ट्स ऑन डे वन। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एंड व्हेन यू गो टू एन इन्वेस्टर विद अ प्रेसिंग प्रॉब्लम, एंड उसमें आपकी किस्मत साथ ये हो सकती है कि आप एक ड्रोन बना रहे हो सिटी को सेव करने के लिए, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, और गलती से हो गया आतंकवादी हमला, आपको 100% फंडिंग मिलेगी। सर्वम की आई डोंट नो दी बैक स्टोरी, बट 100% होगा कि 2-3-4 साल से वो बना रहे होंगे। इट इज़ ओनली कि आजकल ग्लैमराइज हो गया तो ये चीज़ आपको दिख गई है, उनको फंडिंग मिल गई है, बट बना कई साल से रहे होंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि, और एक और चीज़ आपको, एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, फाउंडिंग टीम हैज़ टू बी वेरी गुड। फाउंडिंग टीम जो ऐसी होनी चाहिए कि विच इज़ एबल टू चेंज। जैसे आपने देखा अभी हम ड्रोन्स पे थे, अब हम फिजिकल AI पे आ गए, कल को हम कुछ और आ जाएंगे। तो मार्केट में जो सिनेरियोज है ना वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं। तो इज़ योर टीम एबल टू आइटरेट दैट मच इन देयर हेड?
प्रॉब्लम इज नॉट टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लम इज इंसान चेंज नहीं होना चाहता, और हैव अ टीम विच इज एबल टू चेंज एज फास्ट विद टेक्नोलॉजी. मतलब जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर मुझे विजय आज फ़ोन करें अभी और मुझे कहें मैं पेटीएम बंद कर रहा हूँ, मैं स्पेसएक्स खोल रहा हूँ और पेटीएम का पिवट होने वाला है, तो मेरे को टेक्निकली जो भी सीखना पड़ेगा, मेरे को मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है ये चेंज होने में. एंड आई वॉज टॉकिंग टू CEO, एक्स CEO ऑफ पेटीएम, तो आई वॉज जस्ट एज अ फ्रेंड, तो मैंने कहा अगर वो आपके लिए भी ये फ़ोन करें तो आप क्या कहोगी? वो कह रही है मैं तो 100% दोबारा पेटीएम ज्वाइन कर लूँगी. उसका रीज़न वही है कि द पीपल ही रिक्रूटेड वर वेरी एजाइल इन देयर मेंटल स्ट्रेंथ. और प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं आएगी आपको प्रॉब्लम वो आएगी कि आपकी टीम क्या एजाइल है उतनी. फिर फाइनली देखिए, एंजल इन्वेस्टर्स इन इंडिया जनरली इन्वेस्ट बिटवीन 5 lakhs and 1 crore. तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट हाउस वगैरह में नाम नहीं है तो आपको इस 1 crore के अंदर प्रोडक्ट मार्केट फिट लाना पड़ेगा. और गवर्नमेंट की जनरली, जैसे आई हैव बीन अ मेंटर इन स्टार्टअप इंडिया एज वेल एज जज इन स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, तो गवर्नमेंट की तो 20 लाख 25 लाख से ज़्यादा की कोई ग्रांट स्कीम है नहीं. 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर आपको कहीं भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट मिलेगी नहीं किसी गवर्नमेंट स्कीम में. तो एट सम पॉइंट यू हैव टू टेक अ कॉल कि क्या मैं 1-2 करोड़ रुपए के अंदर कुछ ऐसा बना सकता हूँ जिससे प्रोडक्ट मार्केट फिट हो, बिकॉज VC तो उसके बाद ही आएगा. 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपको सारी गवर्नमेंट स्कीम आप निचोड़ दोगे और सारा एंजल इन्वेस्टमेंट से आप निचोड़ दोगे, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं मिलेगा. तो मतलब वाई आई वॉन्ट टू गेट थिंग्स स्ट्रेट इज, हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं बिकॉज मीडिया में बहुत कुछ आता रहता है, बट आई हैव सीन पेनफुली कि आप मतलब एक मेरी मदर कह रही थी जब मैंने 100 बुक्स पढ़ी, कह रही है इतना तू कॉलेज में पढ़ता तो तू दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपर होता. तो मैंने कहा जब वो खून के आंसू रुलाती है ना, जब जो एंटरप्रेन्योर हैं दे कुड रिलेट विद इट, तो वो आपको ना बुक पढ़ने की इच्छा होती है. आप 200 पेज की बुक एक दिन में पढ़ोगे क्योंकि आपको लग रहा है यार जो चीज़ के लिए 5 साल से तड़प रहा था ये 200 पेज की 500 रुपये की बुक में लिखा हुआ है. तो पॉइंट यही है कि आपको कोशिश ये करनी है कि यू हैव टू क्रिएट प्रोडक्ट मार्केट फिट विद इन 1 crore or 2. एंड आई नो जैसे आप कह रहे हो वो प्रॉब्लम है, बट आप देखोगे देयर आर सॉल्यूशंस. आपको सिर्फ लीन स्टार्टअप अप्रोच यूज़ करनी है. आई अंडरस्टैंड आपको अगर एयरबस का एरोप्लेन बनाना है, बट आपको किसी ने कहा नहीं है कि एयरबस के एरोप्लेन से आप स्टार्ट करो. यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद अ लाइटर एयरक्राफ्ट. आई अंडरस्टैंड 200 करोड़ की जगह 20 करोड़ लगेंगे, 2 करोड़ में नहीं होगा, बट देन दिस इज़ योर कॉल. क्या मैं 2 करोड़ में बना सकता हूँ? नहीं बना सकता तो मे बी ज्वाइन सम कॉर्पोरेट ग्रुप, गिव देम एन आइडिया, बट 2 करोड़ से ज़्यादा आपको कोई स्टार्टअप इन्वेस्टर पैसे नहीं देगा. तो विद दैट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि देखिए स्टार्टअप्स आर अनसर्टेन, बट डर के आगे जीत. मैं आपको एक क्लियर चीज़ बताता हूँ. जब मैं पेटीएम में पहुँचा तो आई केम टू नो अबाउट अ SVP हु हैड इन हिज बायो 3rd time इन पेटीएम. तो उन्होंने अपने ट्विटर बायो में लिखा होता 3rd time इन पेटीएम. मैंने कहा ये क्या होता है 3rd time इन पेटीएम? तो कह रहे हैं जब पहली बार मैं पेटीएम में VP बना, थोड़े पैसे इकट्ठे हुए, स्टार्टेड मैं स्टार्टअप, नहीं चली मैं वापस आ गया फिर नहीं चली फिर वापस आ गया. तो व्हाट आई हैव स्टार्टेड सीइंग इज, जो विजय दीपेंद्र इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, ये फेल्ड स्टार्टअप इन्वेस्टर्स को बहुत वैल्यू देते हैं. आपको कोशिश ये करनी है कि आप स्टार्टअप खोलिए. आई अंडरस्टैंड फेल होता है, बड़ा दुख होता है, बट वो दुख भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. मेरा एक दोस्त था, ही स्टार्टेड अ AI स्टार्टअप इन 2014 एंड विजय इन्वेस्टेड इन ए स्टार्टअप. एंड एक दिन पता चला टेक क्रंच में न्यूज़ आई, हिज स्टार्टअप हैज़ बीन बॉट बाय पेटीएम एंड ही हैज़ बिकम VP इन पेटीएम. मैंने उसको बधाई के लिए फ़ोन किया और वो बेचारा बड़ा दुखी, कह रहा है यार हमने बड़ी कोशिश करी, 1000 करोड़ की वैल्यूएशन हो नहीं पाई, फिर फाइनली पेटीएम ने 30 करोड़ में हमारी कंपनी खरीद ली. हमने बड़ी कोशिश करी कि 100 200 500 करोड़ की वैल्यूएशन हो जाए, और अब वो VP बना है पेटीएम का, उसकी कंपनी 30 करोड़ में बिकी है, बट वो इतना दुखी लग रहा था बात करने में. तो ऐसा दुख भी अच्छा दुख है अगर आप एवरेज जनता से पूछो. ऐसे ही मैं एक और बताता हूँ. देयर वॉज दिस AVP हु स्टार्टेड हिज कंपनी. अनफॉर्चुनेटली उसकी कंपनी से उसको कुछ इन्वेस्टर्स के साथ कुछ इशू हुआ, ही हैड टू लीव हिज कंपनी एंड ही बिकेम AVP. तो मतलब मैं वैसे आपको बताता हूँ, एक जनरल जॉब में आप VP AVP 10-15 साल में बनोगे. ये सब लोग मैं वो बता रहा हूँ जो 5-5 साल में बन गए, क्योंकि दे वर एबल टू क्रिएट अ कंपनी विच डिड नॉट डू वेल, बट कंपनी इटसेल्फ हैड लॉट ऑफ पोटेंशियल. तो वो दिखाई देता है कि भैया आपने ड्रोन बना लिया, आपने BSF को ड्रोन दिया, आपका प्रोटोटाइप पास हो गया, ठीक है, एज अ कंपनी यू फेल बिकॉज आपको वर्किंग कैपिटल नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, बट एट द एंड ऑफ द डे स्टिल पोटेंशियल तो दिख रहा है ना आपको. अडानी जी तो बुलाएंगे, अडानी जी तो कहेंगे कि मेरा हेड बन जा.
तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हार नहीं माननी, एक अटल जी की लाइन है, हार नहीं माननी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो ना हार मानिए ना रार ठानिए, चलते रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हाँ, एलोन मस्क शायद ना बनो, शायद विजय शेखर शर्मा ना बनो, बट 150 करोड़ के आदमी जरूर बन जाओगे आप, हार नहीं मानोगे तो विद दैट आई वुड लाइक टू से बिल्ड फॉर इंडिया। हमारे देश को आपके जैसे स्टार्टअप्स चाहिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आई कैन आंसर 1 or 2 क्वेश्चन। यस, पेटीएम का मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉब्लम कोई नहीं है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ तो इसलिए आपको मन से बता रहा हूँ। तो देखिए, मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर कह रहा हूँ, कोई रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं सेबी की तरफ से वो क्लियर बता रहा हूँ कि आई एम नॉट अ एडवाइज़र, बट नहीं, मैं इसीलिए मैं थोड़ा लीगल इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज रिकॉर्डिंग हो रही है कि आई एम नॉट एन एडवाइज़र एज वेल एज आई एम अ शेयर होल्डर एज वेल एज एन एडवाइज़र इन पेटीएम। तो मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है आपको बताने में। बट आई वुड से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ, स्टार्टअप इज़ दिस एंड दिस। तो स्टार्टअप ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये भी हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें बना रखा है कि अगर आप फेल हो गए तो फेल हो गए, फेल होना इज पार्ट ऑफ दैट। जैसे बच्चा जब चलता है तो वो गिरता है ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो 2150 से, देखिए प्रॉब्लम मैं अपना बताता हूँ। व्हेन आई लेफ्ट पेटीएम, मेरे ESOP 800 रुपये में बिक रहे थे। एक दिन एक लेटर आया एक ब्रोकर का कि जी हम 1200 रुपये में खरीदना चाहते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी यार, बैठे बैठे कई लाख रुपए बढ़ गए। अब वो बढ़ते गए, मैंने 2626 रुपये में अपने 1500 शेयर बेचे, विच वॉज अ रिलेटिवली लेस, मेरे पास जितने शेयर थे उस हिसाब से। अब आई वॉज वेरी हैप्पी यार, ये तो बैठे बैठे पैसे आ गए। अब मैंने कंपनी में अप्लाई किया, 2 हफ्ते में परमिशन आती है, वो इन्वेस्टर से परमिशन आती थी। तो 2 हफ्ते में 2800 रुपये का शेयर गिरने लग गया। अब आप सोचिए गिरते गिरते कहाँ पहुँच गया। जो मेरे रिश्तेदार मेरे से जलते थे कि 2800 रुपये का शेयर है, लोग यहाँ तक कहते यार ऐसे ही मिल गए। मैंने कहा ऐसे नहीं मिल गए, काम किया है, फ्री में नहीं मिले। बट अब वो गिरते गिरते 300 रुपये का, 325 जितना भी लास्ट हुआ था, तो वो यहाँ तक कहने लगे यार तेरे से पागल कोई नहीं है कि 2800 का शेयर तूने बीच में बेचा नहीं और 325 का हो गया। मैंने तो एक ही चीज़ बताई उनको, मैंने कहा जिस दिन तक विजय शेखर शर्मा CEO है मैं तो बेचूंगा नहीं। उसका रीज़न एक ही है, देखिए ये जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, बड़े रेयर पैदा होते हैं। आई क्लियरली सो, मैं आपको थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस मैंने पढ़ी बुक, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक थी 2017 में, कि देर आर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुक लिखने वाला कह रहा है कि हमें लगता है सिर्फ IQ इंटेलिजेंस होती है, नहीं 8 तरीके की इंटेलिजेंस होती है। और वो 8 तरीके की इंटेलिजेंस मुझे हिंदुस्तान में सिर्फ एक आदमी पता है जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो विजय शेखर शर्मा। वो खुद भी कहता है वो ऑथर की 8 इंटेलिजेंस सब में नहीं होती। तो देखिए आई वुड नॉट बेट अगेंस्ट हिम। उतार चढ़ाव स्टार्टअप का पार्ट है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एलोन मस्क के भी रॉकेट फ्लॉप हुए बीच में, तो वो पार्ट है, देखिए वो उतार चढ़ाव पार्ट नहीं। मैं आपको बताऊं, ग्रे मार्केट में 2600 रुपये का शेयर था जब उन्होंने 2150 किया। 2800 रुपये का भी शेयर बिक रहा था, मेरे पास 3-3 हज़ार रुपये की भी ऑफर आ रही थी ग्रे मार्केट में। तो उन्होंने तो बेचारों ने 2150 किया ना। जब 2800 रुपये में मेरे को ऑफर आ रही है, फ़ोन आ रहे हैं, तो 2150 किया, तो उनकी गलती नहीं थी। उन्होंने तो 20-25% डिस्काउंट ही दिया ना ग्रे मार्केट प्राइस से। बट उस समय देखिए देयर वाज अ बुल मार्केट फॉर स्टार्टअप शेयर्स के लिए थी ना। नहीं तो अभी भी आप ये देखिए, अगर किसी ने 350 रुपये में शेयर खरीदा तो उसका तो 4 गुना हो गया ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, देखिए नोबडी कैन प्रिडिक्ट, शेयर्स में ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, गिरना इज पार्ट ऑफ बीइंग अ स्टार्टअप। तो एक बार मैं बताता हूँ आपको, VPs की हमारे एक वो हो रही थी गेट टुगेदर, तो उसमें विजय स्टेज पे आए। विजय बोले लोगों को ऐसा लगता है कि हम ऐसे आए, और ये 2018 की शायद बात थी। बट असली ज़िंदगी में ना मेरी ज़िंदगी ऐसे रही। तो देखिए वो उतार चढ़ाव इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ। मतलब मैं तो एज अ शेयर होल्डर खुद भी हूँ, आपसे ज़्यादा भी रख के बैठा होगा, बट मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, उतार चढ़ाव इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ। देखिए वो मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं, आई वुड नॉट से, बट द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से इज कि पार्ट ऑफ द लाइफ है उतार चढ़ाव। वो मत घबराइए कि गिर गए। वो वैसा आप वो कह रहे हैं, आपने एक शाहरुख खान की पिक्चर देखी होगी, उसमें वो गाना था, ये तो है अलबेला हज़ारों में अकेला। तो वो फेल हो गया, उसके फादर ने उसको डांटना शुरू कर दिया। बट फेलियर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड स्टार्टअप्स में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स फेल होते हैं, एंड दैट इज़ वॉट दे लर्न। और वो मतलब दैट शुड बी टेकन पॉजिटिवली। Any other question?
So it was great to be with you, and I would really like to say कि अगर आप थोड़ा सा ये मैं 4 घंटे की करता हूँ और ज़्यादातर 5-6 घंटे लगते हैं, तो 3 o'clock से 7 o'clock तक on 23rd August there is this workshop free of cost Zoom पे. आपको अगर इसके लिए रजिस्टर करना है तो आप स्टार्टअप इंडिया की साइट पे जाइए, उस पर वो पेटीएम बिल्ड फॉर इंडिया का बैनर है, उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं. तो थैंक्स. Thank you so much, sir, for motivating everybody, and I think we'll all learn from your experience as well. Thank you ever so much for being here. I'll request Dr. Jitendra Singh, sir, to please present mementos to our esteemed guests. Unfortunately, the others have left, so a big thank you to Mr. Saurabh Jain, founder, Uncle Maths Lab, and advisor Paytm. Can we have a big round of applause, sir? I think sir has made the A big thank you to Srimati Nidhi Khurana from SIDBI. Thank you for sharing the details and for partnering with us for this program. The program is a success because of SIDBI's participation. Thank you very, very much, ma'am. So I'll request all the dignitaries to stand. And we'll just like to felicitate our exhibitors also. So if you all can just stand, requesting somebody from ECIL to come and take a memento from our side. ये सरफराज पीछे कर दो थोड़ा, हाँ टेबल्स थोड़ा पीछे कर दो, सब आगे आ जाएंगे. थैंक यू. So thank you to all the exhibitors for coming and exhibiting, and for showing their interest, their innovation. The Air Chief and the Vice Chief were very happy. So big thank you to ECIL for showcasing their innovation and also for partnering with us. A big, big thank you. Let's have a big round of applause for everybody, please. Somebody from Big Bang Boom. If there is somebody from Big Bang Boom, Saurabh or... Okay. Shilpa Medicare Limited. Big Bang. Okay, Big Bang Boom. Please join us. The founder was supposed to come, but due to a medical emergency, he could not. Big, big thank you for showcasing, and they are one of the biggest anti-drone people in the industry. Shilpa Medicare. Is there somebody from Shilpa Medicare? All right. DCM Shriram. DCM Shriram. Thank you so much for showcasing and for being here with us. Thank you. थोड़ा सा जोरदार तालियां हो जाएं सारे एग्जिबिटर्स के लिए प्लीज. Knitpro Composites. Is somebody from Knitpro Composites here? I just met you. Knitpro से हाँ जी आइए प्लीज आइए. STC Labs. Thank you so much for sharing and for coming all the way. Thank you. तालियां थोड़ी बजती रहें, फिर लंच मिलेगा सबको. STC Labs. Thank you so much for showcasing and for being here and coming all the way. Somebody from Chakra Dialogues. They brought in some good innovations. Okay. Aryavat is there somebody from Aryavat? Bharat Skytech, sir has come all the way from London. Gurmeet sir, thank you for joining us. Thank you so much. Somebody from Rebu Computing? Chintan sir or
Hi, please come. So Rebu Computing, they're all young innovators, and let's have, can we just settle down for 5 more minutes, please? Thank you. iDelta Private Limited. Is there somebody from iDelta? Please come. Akshay, thank you so much. So, thank you for showcasing your product. Thank you so much. Is there somebody from IIT Kanpur? All Flamework, Immersive, Atherthon, Cyber Chakra. So IIT Kanpur can come. Please come, please come. दो तीन दे Flamework, Flameback Tech Private Limited. Somebody from Dr. MGR Aerospace. Dr. MGR Aerospace. Thank you, sir. They've been part of the Chambers Manthan since the first edition. And thank you for your loyalty and being with us for the last 3. Thank you so much. I'll request IHFC seniors who've joined us to please come on the dais. Akshay, please bring everybody. Please, sir. Please. So IHFC's brought in 3 very good innovators. I think the Cobra was the best hit. And if you haven't seen, please go and see their Cobra innovation. Big thank you for all of you for being here. We have Agnit Semiconductors Private Limited. Please join us, Agnit. And they've also been part of the Chambers Manthan since the beginning. Thank you so much for coming and being a part. Is there anybody from FITT Delhi? Any exhibitor, anybody from FITT Delhi? Okay, we have the young lady from Vayu CSIR. Can she come up and take her memento? Please, the whole team can join us on dais. कोई रह गया? Ambika, bring the certificates, please. So, somebody from IMS Ghaziabad, can I have? Thank you so much. From Ghaziabad. I hope there is no exhibitor left. If there is some exhibitor, do let us know. IMS Ghaziabad. Please, sir. Please. Thank you so much. And thank you for your support. Somebody from Airborne Academy. Somebody from Airborne Academy. All right. So big thank you to everybody. Can I ask my team to come for a group photograph with Dr. Jitendra sir? I'll invite everybody for lunch. So all the interns, the team, Manju ma'am, and everyone's invited for lunch outside the auditorium. And the stalls are still going to be on till the evening. So you can go and have a look at the innovations after that. Thank you so much. Thank you. Shreya, Hardik, Kritika, Manju, Ambika, please come on the dais for a group photograph. Airborne? Okay. So Airborne Academy. So Sarfaraz, Pushkar, can I have the team for a group photograph, please? Thank you for your support, and this program would have been not possible. Ambika, Manju ma'am, please come. Hardik ko bulao. Hardik. Yeah. Thank you. Ambika.